make an announcement that we have special reserved seats for the awardees, guests, our kind trustees, and also the incoming and outgoing board. The second row has been reserved for the awardees, and I would request them to please be seated. Esteemed guests and beloved MIG family, a very warm welcome to the MIG 2024-25 and the installation ceremony of the 48th board of MIG. Today, under the new theme of sustainability, systems and scalability, we not only celebrate our proud legacy but also cast our vision towards a future that is green, robust and expansively scalable. Get ready for an event filled with heartfelt memories and visionary dreams. As we begin this glorious ceremony, please ensure your mobile phones are on silent mode so that only sound you hear is that of applause, laughter and inspiration. The essence of today's ceremony is all about transformation. Just like a small seed that, with care, blossoms into a towering tree of success. I am sure you will recall our last theme was to inspire, to innovate, and to create a meaningful impact. With that, we are now stepping boldly into a future where every idea is nurtured by sustainability and every system is built to scale. So, join me to welcome a greener, robust future and fill this day with memories and dreams that grow as boundlessly as nature itself. As we celebrate our rich history spanning almost 50 years and with the next year marking our golden jubilee, today's theme is a promise. Our growth will be sustainable, our systems strong, and our ambition scalable. So, a very warm welcome once again. I, Maithili Sagar Rathi, along with I, Apurva Jitendra Lakhotia, Bhagyesh Jitendra Lakhotia And K.R. Dinesh Mundada will take you through the proceedings of the awards and the installation ceremony today. Ladies and gentlemen, to honor our values of innovation and progress, let's begin our sacred journey with the customary lamp lighting ceremony. We pray to the Almighty to let this glowing lamp be a beacon for guiding us in our journey today, tomorrow, and always. May I request our esteemed dignitaries to kindly join us on stage. I call upon our chief guest, Dr. Shrikantji Karwa. Our guest of honor, Shri Sureshji Sodani. Our president, Shri Jitendraji Lakhotia. Our incoming president, Shri Shyamji Bhutada. The chairman of the awards committee, Shri Manojji Behde. Along with our energetic secretary, Shri Kohinoorji Indani, to assist in this auspicious ritual.
you, distinguished dignitaries. I request you all to kindly grace the dais. We extend a warm welcome to our special guests who have journeyed from near and far. I warmly welcome Shri Dinesh Ji Mandhana, the Vice President of Thermax Limited. Madams and sirs, your presence today is really inspiring and motivates us to strive for greater achievements. Now, I cordially invite our LRPC Chairman, Shri Vijayji Jaju, to extend his heartfelt welcome to our esteemed guests at this august gathering. Hello. President Shri Lakhotia ji, respected dais and respected MITians. Respected Chief Guest Shri Srikanth Karwa, today's Chief Guest, I welcome him on behalf of MIT and his gracious wife. I also welcome Shri Sureshji Sodani, Guest of Honor, and his gracious wife. I also welcome all the esteemed dignitaries who have come from all the different institutes from the community, Maheshwari communities. I welcome all of them. I welcome all the awardees and the sponsors and their relatives who have been here to grace the function. It gives me immense pleasure and pride to stand before you today on the occasion of this much anticipated installation ceremony as the outgoing LRPC of MIT Board 24-25. It is both an honor and a privilege to extend my heartfelt welcome to this wonderful gathering. We are truly blessed to have amongst us two towering personalities whose presence elevates this evening. I extend a warm and respectful welcome to our Chief Guest Dr. Srikanth Karwa and Sureshji Sodani, Guest of Honor. Thank you to both of you for accepting our invitation and honoring today's event with your presence. To all our distinguished guests, past and present office bearers and members, thank you for being here and adding to the warmth and spirit of this occasion. Your support is what makes such milestones meaningful. As we step into a new chapter with fresh leadership, I am filled with gratitude for the journey we had and full of hope for the path that lies ahead. Let us celebrate progress, honor dedication, and most importantly, continue to serve our community with renewed passion. Welcome to each one of you once again today present here. Thank you. I would like to request our President Jitendra Ji Lakhotia to felicitate the Chief Guest Srikanth Ji Karwa and our Guest of Honor Sureshji Sodani.
you, sirs. Dear friends, MIG is one large family built on 50 years of passion and perseverance. With over 170 entrepreneurial couples, our legacy has always been about nurturing dreams and pushing boundaries. We are geared to build thriving businesses that are as resilient as they are innovative, ensuring that every step forward is thoughtful and designed for growth. That, dear friends, is the story we are witnessing now. Ladies and gentlemen, allow us to walk you through our exciting award segment. Each award is a tribute to visionary dreams transforming to success. An award today might not just be a trophy on your shelf. It could be the catalyst for the next big venture. It is with pleasure that I invite the awards committee chairman, Shri Manojji Bhede, to take us through the evolution of these prestigious awards and introduce our jury. Let's get ready to celebrate the story of every trophy. Jai Shri Krishna. Good morning. Today, as the chair of the awards committee, it is my honor and privilege to welcome our chief guest, Srikantji Karwa, guest of honor, Sureshji Sodani, special invitee, Dineshji Mandana, one more special invitee, Mr. Shaileshji Jawar, our award sponsors, our esteemed guests, our MIGNs, and our awardees who are going to be felicitated today for their remarkable achievements. Let me also thank our President Jitendraji Lakhotia for giving me this opportunity to chair the awards committee. It's a very fulfilling activity for every IPP. It's really fun. As chair, I would like to start by thanking my committee members who diligently reviewed nominations, helped ensure that every deserving candidate received thoughtful and thorough consideration. Our process is as strong as the people behind it, and I am proud of the integrity and care with which this year's selections are made. I would like to take a minute or two to individually introduce our committee members. Jai Shri Krishna. At MIG, excellence is more than a goal, it's a tradition. Today, we are going to felicitate 4 awardees, and I would like to introduce the team behind it who has been very supportive in selecting all the 4 awardees. Let me start with our President Jitendra Bhai Lakhotia. Every year, we honor the spirit of innovation, leadership, and enterprise. Our incoming President Shyam Bhutada. MIG Award are a celebration of visionaries who shape our industry. Our branding person Mr. Ravi Kabra. Our journey begins with nominations. Real stories, real impact. Our most studious and sincere member Nitin Mundra. Each application is reviewed with care, integrity, and absolute transparency. Our most energetic and bubbly member Ritu Dalia. This year, we have seen groundbreaking ideas and inspiring leadership. Our current secretary and Kohinoor of this group, Kohinoor Indani. Women entrepreneurs
youth innovators, and legacy businesses all stood tall. Most youngest and tallest member, Khush Rathi. Recognizing the awardees is not just our duty, it's our honor. Working member and incoming secretary of this board, Sagar Rathi. We are proud to be part of this journey together as a community. Energetic, dedicated, most dedicated, Madam President. To inspire the next generation of dreamers and doers. Our AI expert, Manish Rathi. We believe in fairness and every voice in our MIG committee matters. Our most sincere and methodical member, Rashmi Bhattar. From budding startups to established giants, we upload every success story. Our member with deep industrial association, Neeraj Mantri. The MIG Awards is a platform to shine a light for local brilliance. Welcome to Mahesh Industrial Group Awards 2025. Where excellence takes the stage. I am sure everyone would have liked this different way of introducing our team members. Now each of our awardees today has demonstrated not only excellence in their respective fields, but also the values that inspire and uplift our entire community. Through dedication, innovation, resilience, and compassion, they have gone above and beyond, not for recognition, but from a genuine desire to create meaningful impact. To our awardees, your achievements reflect the best of who we are and what we aspire to become. On behalf of the committee, we warmly congratulate all the awardees and thank you with deep respect. You all are an inspiration to us. सफलता की राह में संघर्ष ही तो सीढ़ी है. जो धैर्य और विश्वास से चढ़ता है वही मंजिल पाता है. धन्यवाद. आपका तहे दिल से शुक्रिया मनोज अंकल. That was truly fascinating. Understanding the vision, values, and the immense effort behind these prestigious recognitions make each award even more meaningful. And here it is, the moment we've all been eagerly waiting for, the celebration of excellence, dedication, and the spirit of entrepreneurship. Let the award ceremony begin. First up, the Bhagiraji Tapadia Award for Best Male Entrepreneur. This award, instituted over 20 years ago to recognize first-generation entrepreneurs, and has always celebrated visionary entrepreneurship. Today, it embraces sustainability too. It honors Shri Bhagiraji Tapadia's legacy of ethical business practices, dedication to promoting entrepreneurship, education, and women empowerment. Let's get to know more about our awardee from this audiovisual presentation. There's no shortcut to real impact. Real change takes time and belief. A belief that clean energy shouldn't only light up big cities, but reach every village, every home. With this belief, Gopal Kabra moved from Nanded to Pune with a passion for solar energy and a vision that clean energy shouldn't be a privilege for the few, but a right for all. He began his journey in this pursuit first as a consultant in solar energy, and then as a supplier of solar products under government schemes. Over 2 decades ago, Gopal Kabra founded GK Energy with a single mission: to decentralise solar energy access across the nation.
his work didn't go unnoticed. GK Energy was appointed as the coordination and management entity by the Ministry of New and Renewable Energy and the United Nations Development Programme to lead India's programmatic Clean Development Mechanism project for solar water heating across the country. He didn't just implement, he helped shape national policy, set industry standards, and led clean energy innovation. In the tribal belt of Gadchiroli, where electricity was once a dream, GK Energy brought light to 40 remote Naxal-affected villages. Over 10,000 people gained access to clean energy, and 1,700 households created new livelihood opportunities. I'm Gopal Kabra, founder and CEO of GK Energy. I have started this company way back 2008. That time no one was concentrating towards the decentralized solar solution, but I feel this is not the most required because India as a country is very geographically diversified country, and there are lots of area where the reach for the regular grid is not there. So we have been doing the decentralized solar system installation across the nation. It includes around 6 to 7 major states in the country. Currently, we are #1 solar water agriculture pump EPC company. We have more than 1 lakh solar installation. In that, we have provided the water to more than 1 lakh agriculture farmers and their family. So that gives the impact for their life upliftment. These are the farmers, those who were not getting the power and they were unable to do the irrigation. So this given us a boost to their agriculture income, and I believe this will uplift right now 1 lakh families, but it will going to result in multiple in coming decade. Our aim is to provide the catalyze the renewable energy for the agriculture sector, and I believe success cannot be arrived in a 1 year or 2 years. You have to go thoroughly. You need to study your sector in detail, irrespective of the sector you are working. If you understand your sector very well, then definitely today or tomorrow success will reach to your destination. This is what my firm believe, and we work with the principle on the constant growth. We don't believe to have the tremendous growth which is not sustainable. Growth has to be sustainable, and it come into the sequence only. Gopal Kabra's leadership has also been widely recognised. He served as the first Secretary of the Solar Thermal Federation of India, was a 3-time Director of the Maharashtra State Manufacturers Association, and was honoured with the Udyog Ratna Award by IES for his outstanding contribution to India's renewable energy ecosystem. And the journey shows in the numbers. From just 24 crore rupees in 2019 to a projected 700 crore rupees in 2025. GK Energy has already crossed 1,100 crore rupees in sales this year. That's not just growth, it's the result of steady work, strong partnerships, and a clear purpose. Not for industries, not just for the grid, but for villages, schools, and Anganwadis. Today, we recognise not just a visionary entrepreneur,
but a leader who has empowered communities, shaped national energy policy, and illuminated the path toward a cleaner, more equitable future. Adding a special touch of coincidence, may I now request Ravi Ji Kabra to please escort our awardee Gopal Ji Kabra on the stage. We also take this opportunity to recognize our awards. Without a proper thank you to them, this legacy cannot continue. This award is proudly sponsored by Shri Rajendra Ji Tapriya. May I request Ritu Ji Rathi to escort him on stage. I respectfully ask our chief guest to present the award to Shri Gopal Ji Kabra and then offer a token of appreciation to our sponsors. Congratulations, Gopalji. Would you like to share a few words on this occasion? I would like to request the chief guest to felicitate the award sponsor. Gopalji, we are eager to hear from you. Good morning, everyone. Thank you. I have been given 3 minutes only, so I am habitual for not leaving the mic. So that's why I asked, sir, kitna time hai? So my journey started from my school time. My basic interest came into the solar when I was in 10th. And then I came to Pune. And when I came to Pune, I have seen the Marathi mein bola jata hai Anna Vastra Nivara.
So these are the three basic things where if you do the business, your business is not going to die. But I realized somehow communication and energy are the two more, I would say, business essence that can lead the country and world. So I've given a chance to work under the carbon projects. So I was doing the clean energy mechanism projects that time. And eventually I become a secretary to the All India Federation, that is Solar Federation of India. And from there journey began. So in that journey, if I see the hurdles are there, and if we find the solution, we get the new gateway. So from solar water heater, being consultant, then to the other sector, and at the in this journey, I reached to the solar agriculture pump. 2014-15 onwards, we are in solar agriculture pump, and I proudly say that GK Energy right now, rather than I should say, it's a CRISIL report. You are from industry sector, so you understand. So CRISIL report says that we are #1 EPC company in India. And I would like to take this thing more ahead, and as we already under some regulation of the SEBI, because we are into the going for the public, I would reference for myself to talk more on this. So I would limit myself in this discussion now. Thank you. Thanks a lot. Thank you, Gopalji. Your journey is indeed an inspiration to everyone present here, and you make us all very proud. Our next award, the Omkarnathji Malpani Award for Best Female Entrepreneur. This award, aimed at encouraging women entrepreneurs, celebrates a trailblazer within our community who has built a solid business. Shri Omkarnathji Malpani, a respected industrialist and philanthropist from Sangamner, transformed his family business into the renowned Malpani Group and has been a pioneer in education and entrepreneurship. Let's take a closer look at the inspiring journey of our awardee through the audiovisual. Entrepreneurship doesn't always begin with a plan. Sometimes it begins with a loss, a responsibility you didn't choose but chose to carry. In 2014, Nikita Baheti, a young graduate in cosmetics, found herself at a crossroads after losing her father. As the eldest in the family, she had to step up, not just emotionally, but financially. In 2015, with just 3,500 rupees and her mother by her side, she launched her own cosmetic brand from her hometown Shirpur in Maharashtra's Dhule district. It didn't take off, but failure didn't stop her. It taught her. Determined to create value, Nikita shifted her focus to manufacturing. In 2016, with a 5,000 rupee India Mart listing, she received her first breakthrough, a 50-kilogram shampoo order. And that's how Nicole Cosmetics was born, a third-party contract manufacturer for cosmetics, focused on delivering high-quality, reliable solutions tailored to every brand's needs. From a few rented rooms to a 1-acre industrial facility with an 8,000 square feet built-up space, Nikita built not just a company, but a purpose-driven workplace. Today, Nicole Cosmetics serves brands across India, from top metros to Tier 2 and Tier 3 cities, with a growing product range of 240-plus cosmetic formulations, spanning hair care, face care, body care, baby products, men's grooming, and even pet care. The company now produces up to 1.5 tons daily and fills over 20,000 units per day. Their strengths? Flexible MOQs, perfect for startups. Strong in-house R&D, enabling superior customization. Focus on clean label and sustainable innovation.
biodegradable ingredients, refillable packaging, and products free from parabens, sulfates, and microplastics. Their manufacturing setup includes advanced equipment like RO plants, vacuum mixers, and homogenizers, ensuring consistency and quality at every step. And behind the scenes is a dedicated team, led by Nikita, operating from their Thane corporate office, with a 90% women-led factory workforce. In 2019, investor Raj Gopal Nogza came on board, recognizing Nikita's vision and backing her through equity support. At the time, turnover was 36 lakh rupees. Last year, it reached 3.6 crore rupees. From one shampoo order to 240 plus SKUs. From personal tragedy to empowering dozens of women and creating impact across India. Nikita's journey is about her strength, grit, and determination. She has received widespread recognition at cosmetic industry forums and continues to inspire the next generation of entrepreneurs. She's proof that entrepreneurship isn't about where you begin, it's about how far you're willing to go. What started from pain is now a place of empowerment, a business built on values, quality, and belief. Nikita's story is proof that you don't need perfect conditions to begin. You just need the courage to start and the will to keep going. मैंने मेरे 9 साल के एंटरप्रेन्योर जर्नी से यही सीखा है कि किसी भी उद्यमी का जिंदा दिल रहना और हर छोटे बड़े चैलेंजेस को ना डगमगाते हुए पॉजिटिव माइंडसेट से एक्सेप्ट करना और उसके प्रति हाँ ठीक है देख लेंगे यह एटीट्यूड रखना ही एंटरप्रेन्योरशिप है, जिससे हम निडर होकर हर चैलेंज को सामना करने की क्षमता रखते हैं जो हमें बिजनेस में 2 कदम आगे रखता है. Today we recognize Nikita Baheti Maru, founder and CEO of Nicole Cosmetics, as the recipient of this year's Best Female Entrepreneur Award, an inspiring leader whose journey is a testament to resilience, innovation, and purpose. I appeal Bhakti Ji Mundada to escort Nikita Ji to the stage. This award is sponsored by Shri Rajesh Ji Malpani. The Malpani family is being represented today by Shri Anup Ji Tapriya. I request Sagar Ji Sarda to lead him to the dais. Now, I invite Shri Shrikant Ji and Shri Suresh Ji to present the award to Nikita Ji. I would request the guests to felicitate the sponsors.
I request the guests to felicitate the sponsors. Many congratulations, ma'am. Please share your feelings on receiving this honor. जय श्री कृष्णा। यहाँ पे उपस्थित सभी को मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूँगी जितेंद्र भोपा जी और कीर्ति बुआ जी को, जिन्होंने मुझे MIG से इंट्रोड्यूस कराया, और सारे MIG कमिटी मेंबर्स और उनके जो फाउंडिंग बॉडी है, जिन्होंने थोरो इंस्पेक्शन से ये मुझे उस काबिल समझा इस अवार्ड के लिए। सो मैं सबका तहे दिल से इस अपॉर्चुनिटी के लिए धन्यवाद देना चाहती हूँ। जैसे कि वीडियो में देखा, एक 50 किलो से 1.5 टन तक हर दिन जाना यह आसान नहीं था। एक सिंगल हैंडेडली हैंडल करके आज 15 से 17 लोग ऑफिस में, 10 से 12 लोग फैक्ट्री में एज ए एम्प्लॉय और 35 to 40 लेबर स्टाफ के साथ में काम करना, ये चैलेंजेस के साथ में भरा हुआ सफ़र है। इसके कुछ ग्लिम्स शेयर करती हूँ। जब मैंने काम स्टार्ट किया तो मैं कहीं पे भी जाती थी, तो मतलब मेरी उम्र 22 साल थी, कहीं पे भी जाती थी तो लगता था अरे ये छोटी लड़की है, क्या करेगी। बैंक में जाती थी फंड के लिए, हाँ ठीक है करते हैं कुछ, आइए ना आप कभी महीने 2 महीने बाद। FD ऑफिस जाती थी, मेरा इंडस्ट्री फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर आता है, वहाँ जाती थी फैक्ट्री डालनी है, अरे मैडम बहुत पैसा लगता है फैक्ट्री डालने को, आप करोगे अप्रूवल, हाँ आएंगे ना, इंस्पेक्शन के लिए आएंगे। सो लॉट ऑफ चैलेंजेस बट कंसिस्टेंसी इज़ द की आई बिलीव। और ये सबके साथ में मुझे मिला मेरे फैमिली का सपोर्ट, शादी के पहले भी और शादी के बाद भी। फिर 2019 में आई मेट मिस्टर राजगोपाल नोकजा हु इन्वेस्टेड इन द कंपनी। अगर शायद तब बैंक वाला मुझे ऐसे नहीं बोलता तो मैं किसी इन्वेस्टर की खोज में बाहर जाती ही नहीं, और मैं एक छोटे से जगह पे मेरा एक लैंड लिया था इंडस्ट्रियल एरिया में जो 10,500 स्क्वायर फीट का था, वहीं पे शायद काम कर रही होती, ना कि मैं 1 एकड़ के लैंड में आके 8,000 स्क्वायर फीट के शेड में बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर पाती। सो इस जर्नी में कई अच्छे लोग मिले जिन्होंने डायरेक्शन दिया, तब के एक्सपेक्टेशन और आज जो मैं सोचती हूँ, ये सब जर्नी में बहुत अंतर ये लोगों के मिलने से हुआ। मैंने तो आस किया था उस टाइम पे कि मुझे 20 लाख रुपए चाहिए, एक मशीन लेना है, पर जब नोकजा जी से मिली तब समझा कि मशीन लेके ऑर्डर नहीं मिले, मशीन को चलाना पड़ेगा, उसको रन करने के लिए फंड भी तो लगेगा, किस तरह से काम होना चाहिए, क्या रोड मैप होना चाहिए। सो अच्छे लोग भी मिले इस जर्नी में, और ये अवार्ड एक प्रेरणा देता है कि हम कई ऐसे अच्छे काम और कर सकते हैं। जब जैसे लगे उस टाइम पे शुरुआत किसी भी चीज़ की करना वो सही वक्त होता है। बस एक ही कहना चाहूँगी, किसी भी चीज़ को अगर पूरी शिद्दत से चाहो तो सारी कायनात उसे जुटाने में जुट जाती है। अभी तक तो नापी है मुट्ठी भर ज़मीन, अभी सारा आसमां बाकी है। लास्ट बट नॉट लीस्ट, a very big thanks to my husband Mr. Chetan and सभी फैमिली मेंबर्स जो यहाँ पे उपस्थित है और जो नहीं भी है यहाँ पे आज उपस्थित, सबका जो मुझे थ्रू आउट पूरी जर्नी में सपोर्ट करते हैं और कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू द टीम अगेन, थैंक यू, जय श्री कृष्ण। Congratulations and thank you so much मैम। आपके इस स्टोरी और जर्नी से बहुत महिलाओं को प्रेरणा मिलती है, proving that excellence has no bounds. Surely Namita ji would be proud of her daughter. Our next award is designed to honor a dynamic leader whose strategic vision
transforms challenges into triumphs. The Champalalji Sarda Award for the Best Professional Executive. This award was introduced to recognize the increasing and impactful presence of Maheshwaris in leadership roles in corporates. Sri Champalalji Sarda, an engineering graduate and founder of Embla Sales Corporation, established many of MIG's traditions as the first president upon its formalization. Here's an audio-visual glimpse into the impactful journey of our awardee. In the world of finance professionals, creating your own uniqueness is the greatest skill you can possess. Sachin Somani didn't just understand this, he lived by it. Born in 1979 in Ahmednagar, now Ahlianagar, Sachin enjoyed a simple and happy childhood. His journey began in the humble classrooms of Bahu Sahib Firodia High School. Like many, he enjoyed life while also being focused on academics. After completing his Masters in Commerce, he went on to pursue a postgraduate diploma in taxation and law and became a chartered accountant in 2005. Starting his career in 2003 at Duke Compact and Epitome Components, he quickly moved from trainee to leading finance teams, setting up entire financial structures, budgets, costing systems, and becoming a trusted voice during critical company decisions. Life changed gears when chartered accountancy became not just a profession, but his way of life. In 2008, Sachin joined CTR Manufacturing in Pune, beginning a remarkable 17-year journey filled with meaningful achievements. While he started working in the finance department, he soon led operations across multiple functions. Under his leadership, the stores and dispatch operations dramatically improved, reducing packing from 3 shifts to 1 and cutting dispatch errors to nearly 0. With greater responsibility came even greater challenges, ones that would test his strategic acumen like never before. At one time, the company had a debt ratio of 15%. With his management's support, he took bold steps, strategically raising debt to 45%. His calculated risk paid off, and in due time, he completely cleared the company's debts, transforming CTR into a debt-free, thriving enterprise. He made company investments in several properties across India, which now have a market value of around rupees 300 crores. In 15 years, CTR Group reached a landmark turnover of 1,000 crores and built a strong treasury of 150 crores. But he didn't stop there. He successfully led the strategic takeover of a major competitor, further expanding CTR's horizons. He led the family office and 16 companies within the CTR Group. Beyond impressive numbers, he is driven by strong values, values deeply inspired by his greatest role model, his father. He believes firmly in ethics over profits, kindness over personal gains, and treating others exactly as he'd wish to be treated. Sachin believes passionately in thinking differently, embracing tough challenges, and never settling until excellence is achieved. For me, success is not just professional growth. Doing consistently with your value system, progressively work with a positive attitude is the success. सक्सेस का कोई एक मंत्र नहीं हो सकता. जैसे फूलों के गुलदस्ते में अलग अलग फूलों से वो बहरता है, वैसे ही सक्सेस अलग अलग मंत्रों से हो सकता है. एक मुहावरा है, बूंद बूंद से समंदर बनता है. इसमें सीधी बात बोली गई है कि छोटे छोटे टारगेट्स अचीव करते रहो और अपने राह पे चलते रहो, उसी से आपकी अल्टीमेट मंजिल हासिल होगी. उसी मुहावरे में एक और चीज़ है, उसमें बोला गया है कि पेशेंस. यदि बूंद बूंद से समुंदर बनाना है तो आप में पेशेंस बहुत ज़रूरी है. तो आपके सक्सेस मंत्रा के साथ यदि आप पेशेंस जोड़ दो तो बहुत ही बढ़िया तरीके से आप अपनी मंजिल हासिल कर सकते हो. His mantra is clear. Never stop until you are genuinely satisfied. Today, we recognize not just an exceptional executive, but a remarkable human being. A leader who has inspired, transformed,
and made a lasting difference in his professional stints. I invite our jury member Pradeep Ji Rathi to kindly escort Sachin Ji to the stage. We thank Srimati Sunanda Ji Sarda for sponsoring this award. I now invite Neelam Ji Sarda to graciously escort her to the dais. May I request our guests to present the award to CA Sachin Ji Somani. I would now request our guests to felicitate our sponsor, Sunanda Ji. Congratulations, Sachin Ji. We are eager to hear a few words from you. जय श्री कृष्ण। महेश भगवान को ये आज का अवार्ड समर्पित करते हुए, ये जो जर्नी था लाइफ का, इसमें बहुत सारे लोग आते गए जुड़ते गए, उनका धन्यवाद करना ये बनता है। शुरुआत करता हूँ MIT ग्रुप के जूरी मेंबर्स से, जिन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि ये अवार्ड मेरे पास आ सके। थैंक यू वेरी मच जूरी मेंबर्स। इस राह में बहुत लोग आते गए। आज ये जो अवार्ड ले रहा हूँ मैं एक फेस हूँ बहुत सारे लोगों का, जिन्होंने पूरे राह में सपोर्ट करते रहे और आगे मुझे बढ़ाते रहे। सबसे पहले कैटेगरी आती है जो उन्होंने सपोर्ट किया, वो ऐसे लोग थे जिन्होंने राह में बाधा निर्माण करके मुझ में ये कॉन्फिडेंस दिया कि मेरे में है क्या चीज़ है जो मेरी जो ताकतें थी या जो मेरे क्वालिफिकेशंस खूबियाँ थी, उसको निहारने के लिए ये लोग साथ में आते गए और मुझे नई चैलेंजेस देते रहे। सबसे बड़ा थैंक यू तो वो लोगों का रहेगा जिन्होंने मुझे मेरे खूबियों पे काम करने के लिए सहारा। थैंक यू सो मेनी दोज पीपल हु केम इन अक्रॉस माई रोड। देयर आर अदर कैटेगरी जिन्होंने मुझे ये सिखाया जीवन में क्या नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए ये बहुत कुछ सिखा सकते हैं, क्या नहीं करना चाहिए ये सबसे पहले सीखना चाहिए। वो जो लोगों ने मुझे सिखाया वो लोगों का भी यहाँ पे मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। इसके बाद लास्ट कैटेगरी आती है जिन लोगों में पद पे साथ दिया, आगे बढ़ाते रहे, जब भी कठिनाई आई तब हमेशा साथ में रहे। वो अनगिनत लोग जिनका मैं आज यहाँ पे फेस हूँ, वो बहुत लोगों के सपोर्ट की वजह से ही मैं यहाँ तक आ पाया हूँ। आपने यदि देखा होगा, थोड़ा सा अलग तरीके से सोचता हूँ, जो फाइनेंस प्रोफेशनल्स यहाँ पे है, 15% जो कंपनी का डेट था टर्नओवर के साथ,
उसको मैं 45% डेट तक लेके गया और उसी कंपनी को डेट फ्री करके आज उनका 150 करोड़ का ट्रेजरी है। उसके अलावा थोड़ा सा प्रॉपर्टी का समझ था, इसके लिए उनके लिए 16 लाख स्क्वायर फीट इतना बड़ा एरिया जिसका आज वैल्यू 300 करोड़ है, जो डेट में कंपनी था उसका 300 करोड़ का खुद का प्रोफाइल पोर्टफोलियो ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग प्लस treasury operation of 150 crore just in a span of 15 years. That's what my contribution is. Thank you. बहुत बहुत शुक्रिया और बधाई सर. Your thoughts about always being grateful and taking risks are indeed resonating with all the audience. आपकी बातें नए बिजनेस लीडर्स को ज़रूर मोटिवेट करेंगी. The Vishwanath Ji Behde Award for Best Innovation. Innovation distinguishes leaders from followers. With evolving times, we must recognize the spirit of innovation that drives our community forward. The Vishwanath Ji Behde Award, named after one of Pune's pioneering professionals and a guiding force at MIG, honors those who spark revolutionary ideas and transform challenges into opportunities. Now, let's turn to the screen to learn more about our awardees' journey. Industries worldwide face a critical challenge: enormous energy waste, massive water losses, rising operational costs, and increasing pressure to reduce their carbon footprint. Manufacturing consumes 37% of global energy. Billions of liters of water wasted every year. Less than 10% of industries having a clear net zero strategy. This was the reality Greenovative chose to change. In 2017, Greenovative began its journey, committed to actionable sustainability. Their first pilot itself saved 15% energy, proving that impactful sustainability was possible. Greenovative's AI-powered innovation solution helps industries become more efficient, save energy, reduce water waste, cut costs, and lower carbon emissions, all in one place. A smart system that collects data from machines, sensors, and factory systems, analyzes it in real time, gives clear suggestions on where to save energy, water, money, and reduce pollution, helps factories track and reach their net zero goals faster. Unlike traditional systems that just show numbers and reports, Greenovative's platform takes action by finding issues, predicting problems, and suggesting fixes. Works across industries: pharma, textiles, food, cement, etc. This transformative journey was greatly shaped by Herschel Maheshwari, a computer engineer from Nashik, who co-founded Greenovative in 2017 in Pune. Under his leadership and innovation-first approach, the robust, scalable, and future-ready Greenovative platform was built. Greenovative's strength is rooted in its core values: customer obsession, deep industry expertise, results-oriented execution, and above all, a relentless innovation-first mindset. In a few short years, Greenovative expanded rapidly, empowering over 80 leading industries across 5+ countries, from pharmaceuticals and textiles to automotive giants like Tata Motors, Anand Group, and global leaders like Aditya Birla and Almarai, and the results speak for themselves. Driven by dedicated leaders and experts, Greenovative continues to simplify sustainability, create measurable outcomes, and inspire genuine change worldwide. In my experience, there are 5 basic principles to scale in business. The very first is solve the real world problem. Start something that really genuinely need a fixing in a real world. Second is keep it simple. Simplicity makes your product best. Build system, not chaos.
You should not focus on building a complex system, but something which is really simple, which will, deliver immediate impact to your customer. Fourth is listen to your customer. You should be very good listener because your customer is going to make you success. The last is value creation. If you create a value for your customer, they will stay with you for a longer period. Today, we recognize an innovative company committed to creating lasting impact. A company whose innovations empower industries, protect our planet, and inspire real change. May I invite our jury member Neeraj Ji Mantri to kindly escort Harshal Ji to the dais. We are truly grateful to Srimati Archana Ji Bede for instituting this award. I now invite Sarita Ji Doot to escort her to the stage. Sirs, one last time this evening, may I request you to present the award to Sri Harshal Ji. Sirs, I would request you to felicitate our kind sponsors. Harshal Ji, we invite you to say a few words. It's an honor. Special mention to Mahesh Industrial Group. I consider this award is coming from an extended family. So, really grateful for this. When it comes to business, I think being a Maheshwari Fellow, our community is recognized globally for its value and business acumen. So I think it's worth noting here. Going forward, special thanks to award committee. I closely saw them. I mean, they put in a lot of energy, effort and time. Meeting multiple, making many meetings and lot of things. Yeah. At last, special thanks to my family and my wife in particular. She keeps on helping me so that I can drive on my passion. Yeah. Thank you so much. Congratulations, sir. You truly ignite innovative minds and remind us of the power of creativity in driving progress. May I request all awardees to come forward for a group press photo. माना हम मारवाड़ी हैं, लेकिन तालियों की कमी नहीं होनी चाहिए.
we get a loud round of applause for all the awardees? Congratulations once again to all our winners. Thank you, sirs, for the gracious honors and our heartfelt gratitude to all our sponsors for making these awards possible. A special thank you as well to our awards committee. Their hard work has uncovered the diamonds of our society. With that being said, we now come to an end of the first phase of our event. Brimming with fresh energy and vision, we begin the installation process. I would submit that this year truly was special, as if MIGians grew even closer as a family. To give us quick snapshot of the year, I call upon our secretary couple Kohinoor ji and Anuradha ji Indani. Good morning, everyone. Good morning, everyone. Jai Shri Krishna. What a truly special day this is, filled with emotion, reflection, and celebration. As we stand before you today, we feel immense gratitude and pride in presenting this yearly report as the outgoing secretary of our phenomenal organization, the Mahesh Industrial Group. The year 2024-25 was packed with energy, learning, and yes, its fair share of challenges. But every challenge became a joy to tackle. Thanks to the Power Pack board, we had the privilege to work alongside. Each member brought passion, creativity, and dedication to the table. Together, we transformed hurdles into one successful event followed by another. This year, our theme, Inspire, Innovate, and Impact, was not just a slogan, it was a philosophy. Under the astute leadership of our president couple, Jitendra ji and Kirti ji Lakhotia, we meticulously planned and structured the entire year's calendar around this vision. Every event was designed to inspire minds, encourage innovation, and create meaningful impact. And I believe we were just able to successfully do that. One of the most remarkable milestones was securing Shri Anandji Rathi for our keynote session. It wasn't easy. The coordination, planning, and the constant follow-ups were intense, but what we gained was priceless. The talk wasn't just an address, it was a masterclass in wisdom and financial foresight. A proud feather in our cap indeed. Another event, the Ekal Run in its second year, truly evolved into a mega movement. Thanks to the seamless collaboration between MIG and Ekal team, led with passion by Manoj Bedi and supported strongly by our own very own MIG members Vikram Dut and Ravi Kabra, we saw a new level of structure and professionalism. From planning to execution, every detail was handled with care and commitment. Another unforgettable moment was MIG Night Sham Shandar, a record-breaking event with 103 participants across 4 generations. Though it was a one-day show, the 25 plus days of rehearsals created a unique bonding curve among the MIG members. So let's now have a short glimpse of the year which went by, and we have tried to add some glamour to this function with this. So please enjoy the next presentation.
on knees when I'm begging, 'cause I don't wanna lose you. Hey, yeah, cause I'm begging you. Put your loving hand out, baby. Hey MIT, play Bollywood songs. मैं डालूं ताल पे भंगड़ाओ तू भी विद्या दे चल रंग जमा दे हमके बने सभी मत वाले मन रहे कि मैं आऊं चांद तारे सारे इन हाथों पर मैं चांद रखूं समान में भर दूं तारे हेलो हेलो तू फ्लोर पे जब आई येलो येलो बड़ी सॉलिड मस्ती छाई हेलो हेलो तू मुझे तुमने लगाई येलो येलो मनमोहन करो मेरे भाई Wow, that was an exceptionally long video, but I must say the bond and the culture of MIG couldn't be fit into those 7 minutes. So thank you for your time. And another thing, what truly makes MIG special is its incredible culture. If you ever reach out for help or advice, any member will stand by your side. The support, appreciation and unity here is something that we have never seen elsewhere. It's what makes this organization feel like a family. It's been a tremendous honor to work alongside MIG stalwarts in the last couple of years like Manoj Bhede, Jitendra Ji Lakotia, Shyamji Buttada, Ashish Ji Dalia, Anand Ji Karwa and many, many more whose names couldn't fit into my speech. Each one bringing their own brand of excellence and leadership. Likewise, the suggestions and guidance of our trustees were truly unparalleled at all times. As we pass on the baton, we do so with a heart full of gratitude and pride. This journey was not just about milestones. It was about people, shared dreams, and a purpose greater than ourselves. Thank you, Thank you all for an unforgettable year. Jai Mahesh. Thank you, Jai Mahesh. Thank you, Kohinoor ji and Anuradha ji. What a wonderful and eventful year it has been. Now, a new chapter awaits as we pass the torch to the incoming team. But let me be honest, and I'm sure Bhagyesh Bhaiya will also agree with me कि अब हमारे लंच टेबल पे MIG की चर्चा थोड़ी कम होगी. और मम्मी पापा, क्या आपको भी ऐसा लग रहा है? I would request you to express your feelings.
Jai Shri Krishna to everyone. Today we are privileged to have our chief guest Dr. Shrikant Karwa, guest of honor Shri Suresh Sodani, our Mahesh Ji Bede, immediate past president, our incoming and dynamic leader, President Shri Shyamji Putra, representatives of all Maheshwari organizations, MPF, Mahesh Sanskritik Mandal PCMC, MIG trustees, MIG LRPC, and my dear MIG members. Today, we would also like to take this opportunity to congratulate all MIG award winners. We also look forward to their good contribution for the MIG in coming years. और आपके लिए ये दो शब्द, जो सिर्फ सपने देखते हैं, जो सिर्फ सपने देखते हैं, वो सो जाते हैं, पर जो उन्हें जीते हैं, वो इतिहास बनाते हैं, वो इतिहास बनाते हैं. It feels like yesterday when I first walked into the MIG event in year 2012, not as a member but as an awardee. Back then, I did not know many people in MIG, and to be honest, I didn't expect this MIG platform to become such a big part of my journey, but life has a way of surprising all of us. And I got the privilege of becoming the MIG president with the kind support of MIG members. And a new MIG board was installed last year. And guess what? All of them were engineers. So naturally, we did what engineers do the best. We discussed, but we delayed. And finally, at the last moment, we pulled up our socks to execute the programs in the MIG way and its legacy of its own. We found quick alignment within us and a team to inspire, innovate, and impact. This was not just a tagline, it became a guiding line, like to bring our ideas into actions and to help MIGers grow professionally as well as personally. We took many programs and Kohinoor Bhai has shown all the detail. So this was without support of all my MIG board members, and it was not possible without our trustees' trust in us, LRPC's kind guidance, as well as MIG members' full faith in us, on both of us. जय श्री कृष्णा. MIG ग्रुप की लेडी प्रेसिडेंट बनना मेरे जीवन का सबसे खूबसूरत अनुभव रहा. यह सफर सिर्फ इवेंट्स, मीटिंग्स और सेलिब्रेशन रिस्पॉन्सिबिलिटीज का नहीं था, बल्कि रिश्तों को महसूस करने का था. हर सदस्य को अपने परिवार जैसा मानने का था. यह मेरे लिए सिर्फ एक MIG ग्रुप नहीं, बल्कि मेरी एक्सटेंडेड फैमिली है. इस साल हमने चैलेंजिंग टास्क लिया था, हर किसी के घर जाकर उन्हें एनिवर्सरी फ्रेम गिफ्ट करना. एक छोटा सा गेस्चर, लेकिन इसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा था. इससे ना सिर्फ रिलेशनशिप्स मजबूत हुए, बल्कि वो पल मेमोरेबल बन गए. पूरा साल जो फ्रेम्स देने का सिलसिला चला, वो एक अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंस था. प्रदीप भैया और ऋतु राठी का योगदान इसमें सबसे स्पेशल रहा. पहले फ्रेम से लेकर आखिरी फ्रेम तक ज़बरदस्त सपोर्ट दिया. उनकी हार्ड वर्क और डेडिकेशन की वजह से ही यह सब इतने अच्छे से एग्जीक्यूट हो पाया. इसका इम्पैक्ट ये हुआ कि लोग खुद हमें मैसेज करके पूछते थे कि आपकी एनिवर्सरी कब है, तो हमें भी सेलिब्रेशन के लिए आना है.
सबसे मेमोरेबल मोमेंट मालती जी और सत्यनारायण जी चांडक, इन्होंने हमारी एनिवर्सरी उनके यहाँ बहुत ही धूमधाम से सेलिब्रेट की और सिर्फ हमें ही नहीं पूरी टीम को इनवाइट किया, और जो हमारी एनिवर्सरी पे आना चाहते थे उन्हें भी उन्होंने बुलाया और बहुत बढ़िया तरीके से उन्होंने सेलिब्रेशन किया। ये मेरे लिए बहुत खास है, वो जिस दिन भी मुझे याद आता है तो मेरा दिन एकदम खास बन जाता है। MIT नाइट में इतना अच्छा एक्सपीरियंस आया हमें, वो हम कभी नहीं भुला सकते कि सीनियर्स ग्रुप ने बहुत हमें सपोर्ट किया और उनकी वजह से उस माहौल में ऐसा मज़ा आया कि हर चेहरा खिला, हर मन भक्ति में भीगा। बड़ा मन था अयोध्या जाने का, दर्शन करने रामलला का, पर समय की उलझनों ने रोका कदम, रह गया सपना मन में कहीं गुमसुम। ना घोड़े ना रथ ना पुष्पक विमान, फिर भी हर दिल से निकली जय श्री राम। रंग रोशनी श्रद्धा और प्यार, MIT नाइट बना राम जी का सजीव दरबार। यह सब पॉसिबल हुआ मेरी अमेजिंग टीम, हमारी अमेजिंग टीम की वजह से, जिन्होंने हमारा हर कदम पर साथ दिया। तो आज तो उनके बारे में बोलना बनता ही है। जब 9 रंग मिलते हैं तब बनता है नवरंग, हर रंग की अपनी चमक अपनी बात। ऐसे ही हमारे MIT बोर्ड के ये 9 कपल्स, हर एक ने इस सफर में अपनी छाप छोड़ी, कभी रंगों की तरह ऊर्जावान तो कभी सादगी की तरह शांत। इनकी संगति ने हर पल को एक खूबसूरत कलाकृति बना दिया। We thank each and every MIT board member team 24-25 जिनके साथ यह सफर इतना मेमोरेबल बना। उनके लिए मैं क्या कहूँ, ये तो नवरंग की तरह है। मनोज भैया और अर्चना भाभी की संकल्पना से शुरू हर बात, श्याम भैया और आरती भाभी की रोशनी में खिली सौगात, कोहिनूर भैया और अनुराधा से चमक जो हर क्षण में समाई, उमेश भैया और सरिता की धारा ने नई राह बनाई और हमारी MIT नाइट जरूर चमकाई। प्रदीप भैया और ऋतु संग दीप जले हर मोड़, सागर भैया और पूनम का संग जो मन को जोड़े, सागर भैया और नीलम की गहराई शांति का रूप, आदित्य और निधि संग ऊर्जा मिली हमें नई जनरेशन की, और हमारे LRPC विजय जी जाजू, इनका अनुभव हमें हर कदम पर मार्गदर्शन मिला इनसे। और जो मंच पर नहीं है, जो मंच पर कभी नहीं थे पर हर दिल के करीब थे, आशीष भैया, रितु दालिया, आनंद भैया और आभा, नितिन भैया और भक्ति, जिन्होंने हर पल हमें प्रोत्साहित किया। बोर्ड में इनका योगदान अमिट, हर आयोजन में हर पल में साथ अटूट। मैंने नाम तो सिर्फ इतने लिए हैं, लेकिन यहाँ पर बैठे हुए कई लोगों ने मुझे पर्सनली फोन कॉल की कि कुछ भी हेल्प चाहिए तो आप बोलो। अभी सबके नाम नहीं ले सकते, इसलिए मैंने 4-5 ही नाम दिए। और आई ऑल्सो थैंक्स टू आकार फाउंड्री एंड JK टीम फॉर देयर सपोर्ट इन लास्ट 1 ईयर। इस जर्नी में मेरे परिवार का साथ सबसे बड़ा आधार रहा। जैसे कि अभी भाग्येश अपूर्वा ने कहा कि अभी सच में इसकी चर्चा थोड़ी घर में कम हो जाएगी। उन्होंने हर एक प्लानिंग में, वीडियो बनाने से लेकर तो हर एक इसमें बहुत सपोर्ट किया, मोटिवेट किया, मम्मा आप कर सकते हो ये। और मेरे हस्बैंड, जिन्होंने कभी यह नहीं कहा कि मेरे पास टाइम नहीं है, क्योंकि उन्हें बहुत सारा समय निकालना पड़ा मेरे लिए, क्योंकि वो जो टास्क लिया था हमने एनिवर्सरी फ्रेम घर जाकर गिफ्ट करना, उसके लिए बहुत समय निकालना पड़ा। और हम रहने के लिए पिंपरी चिंचवड़ में है, निगड़ी प्राधिकरण में, तो वहाँ से यहाँ आना यही हमारे लिए बहुत डिफिकल्ट टास्क था, ट्रैवलिंग। जब इवेंट्स का जोश और प्लानिंग का मजा आने लगा, तब एहसास हुआ कि साल खत्म होने को है। यह सिर्फ एक पैशन नहीं, बल्कि रिश्तों की गहराई को महसूस करने का एक्सपीरियंस था। इन कुछ महीनों में जो अपनापन, दोस्ती और यादें बनी हैं, वे सिर्फ 1 साल तक लिमिटेड नहीं रहेगी। चाहे हम कहीं भी रहे, ये रिलेशनशिप्स और ये सुनहरे पल हमेशा हमारे साथ रहेंगे, हमेशा हमारे दिलों में बसे रहेंगे, यादों की तरह। आप सभी को इस सफर में साथ देने के लिए दिल से धन्यवाद। आखिरी में 2 लाइन कहना चाहता हूँ। कुछ सफर ऐसे होते हैं जो दिल में उतर जाते हैं।
पद तो बदल जाते हैं, पद तो बदल जाते हैं, पर रिश्ते अमर हो जाते हैं, पर रिश्ते अमर हो जाते हैं। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। Thank you so much, Mummy Papa, for your heartfelt words. Your leadership has truly brought the MIG family closer and made this year a wonderful one. Now, let us witness a moment of history, the installation of a new board. Today, we give a warm welcome to fresh ideas and bold leadership. Let us begin the installation ceremony. The MIG board originally consisted of positions such as directors, treasurer, secretary, immediate past president, vice president, and president. Later, a young director role was introduced in 2019 to 20. Over the years, our board has been guided by the Long Range Planning Committee. We will now proceed with the handover of responsibilities. Outgoing board members will come forward as pairs to hand over their responsibilities to the new board, who come from the right side of the stage. First, I call upon directors Umesh ji and Sarita ji Dhoot to hand over to Dinesh ji and Sheetal ji Mundara. Dinesh ji Mundara is a practicing CA. He specializes in insolvency and bankruptcy cases and acts as resolution professional, helping companies to revive and resolve. His beloved wife, Sheetalji Mundara, BPL, MCom, CA Enter. She is a partner in multiple firms and runs her firm to cater accounting, compliances and statutory advisory services. Next, Directors Sagarji and Poonamji Rathi will hand over their responsibilities to Kunalji and Meghaji Mantri. Kunalji, an MBA in marketing, leads Sanvi Containers, a high-quality blow-molded plastic barrels manufacturing business. Meghaji, a university topper with masters in electronics, has joined a family business, Guru Kripa Traders in Katwij. She is also a passionate dancer and an active social figure. Now, I invite Pradeep ji and Ritu ji Rathi on board, Manish ji and Shweta ji Rathi. Manish ji Rathi is the founder of Novel Vista, a leading global edtech company. Manish ji is happily married to Shweta ji Rathi, a certified yoga instructor with a deep passion for health and wellness. He is also a recipient of the Bhagirathi Tapriya Best Award. Aditya ji and Nidhi ji Karwa are not here today, but their charge is being taken by Gaurav ji and Shruti ji Mundara. I invite Sagar ji and Neelam ji to onboard them. Gaurav Mundara is the owner at Prava by Mundara Diamonds, a renowned jewellery company. His better half, Shruti ji, CA, MBA Finance, is a creative content writer whose passion lies in poetry. Apart from being a certified astrologist, she is also a sport enthusiast. Treasurers Sagar ji and Neelam ji Sarda hand over to Umesh ji and Sarita ji Dhoot, bringing trusted leadership to this diligent role. Umesh ji holds a bachelor's in civil engineering and holds directorial positions at the Dhoot Group of companies, which are into industrial construction. Sarita ji, a bachelor's in computer science, serves alongside him as a director at Elements Technofab Private Limited. Now, the demanding role of secretary. Kohinoor ji and Anuradha ji Indani pass the baton to Sagar ji and Poonam ji Rathi, who, we are sure, will more than measure up to the challenge with their capability and commitment. Sagar ji is an engineering graduate and IIM Kolkata alumnus with specialization in sourcing and supply chain.
He is the founder at iSource India and partner at Technofab. His best half Poonamji runs a YouTube channel for easy and tasty vegetarian recipes. The new Vice President, Neha Ji and Nilesh Ji Latta, are being brought on board by Shyam Sundar Ji and Aarti Ji Budhana. Today is historic. Not only do we welcome fresh ideas, but for the first time, our incoming board features a lady Vice President who will assume the role of President, a milestone of progress and empowerment. Neha Ji is a chartered accountant, MBA, and manages the HR function at Planetch Consultants Private Limited. Nilesh Ji, a gold medalist, civil engineer, and MBA from US, is the founder of Planetch Consultants and is a successful past president of MIG. With a round of applause, let's now welcome our President, Jitendra Ji and Kirti Ji Lakhotia, who will gracefully pass on the mantle of leadership to the capable hands of Shyam Sundar Ji and Aarti Ji Budhana, ushering in a new chapter of vision and commitment. Shyam Sundar Ji, an engineer by education, began his career in the corporate world before becoming a successful entrepreneur in the packaging industry, co-founding Krishna Private Limited. He is also a recipient of the Bhagirath Tapriya Award. With a master's in microbiology, Aarti Ji is a lifelong learner whose interests span science, graphology, numerology, and spirituality. Her recent achievement of becoming a Gita Vrati, having memorized all 18 chapters of the Srimad Bhagavad Gita. And finally, as an IPP couple, Manoj Ji and Archana Ji Bede step down from their roles, we truly acknowledge their invaluable contributions. Their position will now be filled by Jitendra Ji and Kirti Ji. The chairman of LRPC, Shri Vijay Ji Jaju, would now pass on his charge to Shri Dinesh Ji Kothari. Dinesh Ji, a science graduate who began his pharmaceutical journey in his teens. From retail, he now runs manufacturing unit in Barodiwala, Baddi. His wife, Lata Ji, supports him wholeheartedly. Now, I would request the new chairman of LRP to declare the new board installed. Yes, ready? Sir, थोड़ा सा. Wait, one more. Smile, please. Okay. Thank you. Thank you. The round of applause are falling short. I request everyone to give a round of applause to everyone. Yes. Okay, ready?
नाही थांब ना इथे इथे I would request the new chairman of Jai Shri Krishna. Good morning. Thank you all for being here today morning for this MIG Awards and Installation Ceremony. It is indeed a great honor for me to announce and conduct the installation ceremony. The handover is already done. I am pleased to announce the MIG board for the year 2025-26 headed by Sri Shyam Sundar ji and RTG Bhutada as President, Sri Sagar ji and Poonam ji Rathi as Secretary, Sri Nilesh ji and Neha ji Dattad as Vice President, Sri Umesh ji and Sarita ji Dhoot as Treasurer, Sri Kunal ji and Megha ji Kalantri as Director, Sri Manish ji and Shweta ji Rathi as Director, Sri Gaurav ji and Shruti ji Mundra as Director, and Sri Jitendra ji and Kirti ji Lakodia, President MIG Board 24-25 are now IPP in Board MIG 25-26. I am pleased and honored to conduct this installation. We are confident that under the leadership of Sri Shyam Sundar ji, the MIG will thrive and achieve great things and great heights. I extend my warm welcome to MIG Board 25-26. Thank you. Jai Shri Krishna. Thank you, Dinesh ji. I would request our guests, along with Jitendra ji and Kirti ji, to offer the token of gratitude to the outgoing board. All old board, please come on stage. नाही नाही थांब पहिलं मोमेंट द्यायचा काही द्यायचा दुसरं काही नाही कॉमन घ्यायचं पुढं जा नाही पहिलं ते द्यायचं का हे द्यायचं असं झालं मला तर हो ना मग Let's give the outgoing board a round of applause for their remarkable leadership and dedication to carry amazing events throughout the year.
Thank you. Thank you so much. As we turn the page to an exciting new chapter, we extend our warmest wishes to the incoming team. May your journey ahead be filled with purpose, innovation, success, and quick approvals from our trustees. Finally, I now invite our new president couple to share their plans for the upcoming term. Their strategic vision will serve as a roadmap for our future success. जय श्री कृष्ण, जय महेश। जय श्री कृष्ण, जय महेश। माँ तेरी उंगली थाम के चला था कदम चार, माँ तेरी उंगली थाम के चला था कदम चार, तेरी प्रार्थना से प्रफुल्लित हुआ हमारा परिवार। आज MIG प्रेसिडेंट के रूप में कर रहा हूँ तेरा एक सपना साकार। जहाँ है तू वहाँ से बरसाना। अपने लड़के पे खूब सारा आशीर्वाद और प्यार। कहते हैं बूंद बूंद भरने से भरता है सागर। कुछ ऐसा ही आज MIG ने हमें दिया है अवसर। आपकी सेवा में हम रहेंगे सदैव तत्पर। BOD इंस्टॉलेशन में आप सभी का स्वागत करते हैं हाथ जोड़कर। आज इस अवसर पर श्री श्रीकांत जी करवा को मुख्य अतिथि और श्री सुरेश जी सोडानी को विशिष्ट अतिथि के रूप में पाकर हम गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। मैं सभी माहेश्वरी ऑर्गेनाइजेशन, MPF, MVPM, मेरी कृष्णा पैकेजिंग की टीम, MIG ट्रस्टीज, LRPC, सभी MIGN, पुरस्कार विजेताओं और अतिथियों का सादर अभिवादन करता हूँ। मैं सभी MIG पुरस्कार विजेताओं का दिल से बधाई देता हूँ। आपकी मेहनत और समर्पण की सराहना करता हूँ और आपको आपके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं देता हूँ। कड़े परिश्रम के साथ पथ पर चलते रहें। अपनी मेहनत से आज मंजिल पाई है। हर किसी के लिए प्रेरणा स्रोत बन गए हो आप। आपको इस सफलता पर बधाई है। मैं नामांकन समिति का हृदय से धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने मुझे और हमारे पूरे MIG बोर्ड 25-26 को चुना। साथ ही सभी MIGN का आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने मुझ पर अपना विश्वास जताया। This year, we will be guided by 3 powerful S that reflect our values, our vision, and our collective strength. The first S stands for sustainability. Our responsibility don't end within these walls. They extend to the world we live in. We will be holding seminars and awareness sessions to nurture a sustainable mindset, not just a thought, but in an everyday action. Together, we will take meaningful steps to create a greener, more resilient Amazon for today and for generations to come. The second S stands for system. In today's fast-paced world, we believe that streamlining our efforts brings us closer. This year, all administrative tasks will follow a more systematic and thoughtful approach. Birthday anniversary wish will be automated. This is already started from 1st of April. All events and seminar message will be automated and personalized one. This will be sent to all from MIG official mobile number. We will structured database for detailed planning and share our journey and voices through carefully curated e-magazine. The third S stands for scalability. Our founder envisioned MIG as a platform to uplift budding entrepreneurs and creating a thriving ecosystem of support. Staying with this spirit, we are launching the new MIG Catalyst by the members for the members, which will be a safety net to nurture growth, develop skill, share experiences, and tools to elevate us all. To nurture our inner fabric, we will also reimagine our cultural activities, making them more engaging, heartfelt, and collaborative, so we can laugh more, learn more, and grow together as one family. I stand before you with deep gratitude
and a firm promise, my team and I are committed to carry forward the legacy of President Shri Jitendra Ji Lakhotia and all the past presidents. Together we will build momentum for MIG Golden Jubilee Year, a milestone that belongs to all of us. But dear MIGN, none of this is possible without you. We humbly seek your continued support, your presence, your involvement and your precise time to help in making events more successful and bring this vision to life. Let's walk this path together with purpose, pride and unity. MIG के नववर्ष में नए क्षितिज करेंगे उजागर, इस संस्था का नाम पहुंचाएंगे बुलंदियों के नए शिखर पर। एक दूसरे से प्रेरणा ले हम खुशियां बांटेंगे साथ मिलकर, एक दूसरे से प्रेरणा ले हम खुशियां बांटेंगे साथ मिलकर। आउटगोइंग बीओडी से समय समय पर सही सलाह लेकर उत्साह से नया वर्ष बिताएंगे सब साथ हिल मिलकर। इनकमिंग बीओडी की मेहनत में नहीं रहेगी कोई कसर, इनकमिंग बीओडी की मेहनत में नहीं रहेगी कोई कसर। धन्यवाद आप सभी का हमारी शोभा बढ़ाई आज सम्मिलित होकर। आप सभी के साथ शुरू करते हैं MIG के नववर्ष का यह अद्भुत सफर, MIG के नववर्ष का यह अद्भुत सफर। धन्यवाद। थैंक यू। Thank you, Shyamji and Aarti-ji. I also thank everyone for being a part of this historic transition. Your participation and support have truly made this ceremony truly memorable. Our guests have been very patient and gracious. Just I want to do one announcement for this year. We are starting with MIG Catalyst program for growth under the scalability, an exclusive voluntary growth and governance initiative. The major purpose of this program is that our MIG members are from MSME and small business. The growth of organization is often limited by the bandwidth and mindset of the owner. These organizations tend to follow a unique owner-driven culture which can become a bottleneck for growth. Hence, hiring expert consultant to assess, guide and improve businesses' performances is often prohibitively expensive for MSMEs. MIG aims to bridge this gap by leveraging the vast experience of its senior members through a voluntary pro bono consulting initiative, enabling business to identify blind spot, evaluate key performance area and explore strategic solution for sustainable growth. To explain in more detail, I call upon my team members Anandji Karwa, Dineshji Mundana and Manishji Rathi, who are all there to conceptualize this idea. Alright, we very quickly will give you a sense of what this thought is. I do not take any credit for this thought alone. Shyamji has been very graceful that he's allowed us to present this to you. Fundamentally, the idea is the root of MIG. The genesis of MIG was creating a mentoring and a close-knit family for everybody who becomes a member and enabling growth for all the members who are part of the process. Started off about almost 50 years ago, like the MOCs have told us. And it's always been a situation where the members have supported each other. टाइम बदल गया है और अब फॉर्मलाइजेशन काफ़ी आ रहा है, तो उसी के साथ में MIG में भी काफ़ी सारा फॉर्मलाइजेशन आ रहा है और ये एक स्टेप उस तरफ में है. So the idea essentially is that there will be an advisory board from amongst the MIGians, people who have been a part of MIG and have scaled good heights in MIG, will become advisors for other MIG members. This is completely going to be a pro bono process. The philosophy is based on the balanced scorecard mechanism where we are looking at all-rounded development for all the MIG members. There is absolutely no conflict of interest that is envisaged here. And I believe Shyambhai and Manish and Dinesh have come up with a phenomenal thought
blessed by the trustees already, and I would look forward to everybody taking the maximum benefit of this idea. Manish, you want to add something? Hello, I'm Jesse Krishna. So overall objective, as said by Anand Bhai and Shyam Bhai as well, is to uplift our own community, to give some proper guidance towards the future growth. So from that perspective, there are two major areas being identified. First, the highly experienced, seasoned professional from MIG only who have tons of experience in the respective domains. So they would be acting just like a mentor to guide the business to fly and act more like a catalyst role. So I think the advisories are there on the profile as well here. And the most important thing, we are going to use the global universal standard and the framework to do the evaluation, so that there is a standardization, the outcome is well measured. The way, if you remember, there is a Six Sigma for quality measurement. We are going to use the balanced scorecard to measure the current status of the organization and define the smaller quick wins towards the growth as well. So that's something. Balanced scorecard is an objective which will evaluate the pilot organization from 360-degree perspective, from a client perspective till finance, innovation, internal, production, marketing, sales. Almost entire 360-degree of the growth of the organization would be evaluated with the balanced scorecard initiative. Next slide. I think this slide before. This something is a balanced scorecard which covers the 360-degree view of the organization. This is finance, client, which includes the marketing initiatives, improvement and the innovation and the internal perspective. So that the pilot organization who are going to participate in this initiative, the experienced seasoned professional are going to give them the support into these different domains and the perspective. That's something is an idea. Over to you. I think just look forward to hearing more on this in the coming days, and I mean everybody who does desire to get the benefit of this, reach out to the new board. There will be a sort of filtration process that we want to take on, and with the guidance of the LRT and the trustees, we hope to make this another resounding successful process in MIG. One thought here is that because this needs to be an ongoing process, we will be looking at the vice president of each year being the team lead to run the process. Of course, we have Neha this year who will be taking care of this. Multiple firsts for Neha, so another round of applause for her again. We'll be announcing the balanced scorecard session very soon. Just we are finalizing with the speaker and his dates, and then we'll proceed further on that session. Thank you. Anand. Thank you, Shyamji, Anandji and Manishji. Our guests have been very patient and gracious in doing the honors for us. And like me, I'm sure you all too are eager to listen to their words of wisdom. I request my friend Diya Shyam Sundar Bhutara to introduce our guest of honor, Shri Sureshji Sodani. Good morning, everyone. It is an honor to introduce a remarkable leader and a man of deep integrity, Mr. Sureshji Sodani. A chartered accountant by qualification, he has spent over 28 years shaping excellence within the Aditya Birla Group. His journey began at Grasim Chemicals in 1991, an organization where his father too had begun his own career. Rising through the ranks, Suresh sir went from being the executive assistant to Aditya Birla to heading major units like Tanfac Industries, Grasim Renukut and Vilayat. Today, he leads Century Enka Limited as its managing director since 2020. In 2019, he was recognized with the prestigious Chairman's Accomplished Leader Award. Beyond the boardroom, Sureshji is known as a grounded family man. He shares his journey with his wife Evaji, a scholar in her own right with a PhD in economics, and takes great pride in his two sons. We are grateful that Evaji is also amongst us today. Please join me in welcoming Mr. Sureshji Sodani. Sir, please honor us with your words. Thank you so much.
afternoon, namaskar. Respected Shrikant ji Karwal, Jitendra ji Lakhotia ji, Shyam ji Bhutra, Manoj ji, all the MIG members, all ladies, gentlemen, and MIG entrepreneurs. It's a great pleasure for me to be standing like an executive amongst businessmen and entrepreneurs, and I think I have more to learn than to give any advice to you. But it is also my privilege to be speaking to a very enlightened group of people who themselves are very successful, and to share not just my success or whatever I have achieved in my life, but more on how the Aditya Birla Group has grown from a very humble beginning to be one of the largest corporate in India. Before I do that, I think it is important to recognize what are the 4 important pillars on which any business, and my own experience that the Birla Group has also embraced those 4 pillars and continues to do so even today. The 4 pillars are purpose, vision, strategy, and execution. I'll start with the purpose. Purpose is, we all know, one of the main purpose of business is profits and growth. But that is not the only purpose. And I was very happy to see the activities of MIG Group and to hear about various achievements of the award winners, which clearly show that it's not just profit, but it is much beyond profit for each of the businesses and each of the people who are representing that business today. Just to enlighten the purpose of Aditya Birla Group, it is to enrich lives of people by building dynamic and responsible businesses and institutions that inspire trust. And if you have seen very recently the campaign of Force for Good, उसका पर्पस ये है कि हमारे फाउंडर जो लेट घनश्याम दास जी बिरला की तरफ के समय से उनका एक ट्रस्टीशिप कॉन्सेप्ट था, बिजनेस हम सिर्फ बिजनेस के लिए या फैमिली के लिए नहीं कर रहे हैं, इसका बेनिफिट एक लार्जर कम्युनिटी को जाना चाहिए, और वो ना सिर्फ एक एम्प्लॉयमेंट वे में जो कि हमारे साथ काम करते हैं उनके लिए नहीं है, जो बाकी इंस्टीट्यूशंस हैं उनके जो इतने सारे टेम्पल्स, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, एक्सीलेंस के लिए स्कॉलरशिप और बहुत सारे ऐसे काम करते हैं जो कि इट इज़ बियॉन्ड रिक्वायरमेंट्स ऑफ द बिजनेस. एंड आई वाज वेरी हैप्पी टू सी कि ये सेम एक्टिविटीज़ आप लोगों के ऑलरेडी है. So I don't have to speak much about the purpose, and that has to remain as a guiding force. अगर पर्पस हमारा स्ट्रॉन्ग नहीं है तो उसके बाकी पिलर्स में वो स्ट्रेंथ नहीं आ सकती. सेकेंड इज विजन. On a lighter note, in one of our meetings, in one of our award ceremonies, the chairman had just quoted to one of our senior executives, you need to sharpen your vision. And in the same humor, the executive replied, I've just bought a new pair of glasses. So I'm not talking about that vision. The vision is ability to see beyond what an ordinary person can see. कुछ एग्जाम्पल्स मैं आपको देता हूँ घनश्याम दास जी बिरला के समय से. जब 1947 में पार्टीशन हुआ तो उस समय जो कॉटन प्रोड्यूसिंग एरिया था वो मैक्सिमम पाकिस्तान में चला गया था, और जी.डी. बिरला जी पूरी अपने पॉलिटिकल लीडर्स के साथ कनेक्टेड थे, तो उनको समझ आया कि अगर इसका कोई रिप्लेसमेंट नहीं हुआ तो इंडिया में कॉटन की शॉर्टेज हो जाएगी और कपड़े की शॉर्टेज हो जाएगी. और सिंस ही यूज्ड टू ट्रैवल अब्रॉड वेरी फ्रीक्वेंटली, ही वाज अवेयर ऑफ अ टेक्नोलॉजी वेयर cellulose could be extracted chemically out of softwood, and it was under development. I'm talking of 47 and 50s. We are very comfortably talking about technology and other things. उस जमाने में सोचिए उनका विजन आया कि अगर हमें कॉटन का रिप्लेसमेंट ढूंढना है जो नेचुरल नहीं हो सकता है, तो एक ऐसी टेक्नोलॉजी लानी पड़ेगी जो सॉफ्टवुड से
सेल्यूलोज को निकाल कर उसको धागे में, उसको कपड़े में कन्वर्ट कर सकती है। और उसी तरह से ग्रासिम का जन्म हुआ। ग्रासिम में पहला 25 टन का प्लांट, 25 टन पर डे का प्लांट नागदा में इंस्टॉल हुआ और आज वही कैपेसिटी 3000 टन पर डे हो गई। और वी आर वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ विस्कोस स्टेपल फाइबर विच इज़ एन ऑल्टरनेट टू कॉटन। तो उस जमाने का विजन देखिए, जो बिना कोई ट्रेनिंग, बिना किसी फॉर्मल एजुकेशन के बिना उनका ये विजन था। ये विजन हम सब में आ सकता है, लेकिन कुछ इस तरह के लोग रहते हैं जो बहुत आगे की सोच सकते हैं। एक एग्जांपल और देता हूँ उन्हीं के समय का। यूपी में रेणुकूट के पास एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, एक डैम बन रहा था, रिहान डैम, और उसमें हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन है जो आज भी चलता है। आज मैं उसको देख के भी आया हूँ, उसमें 75 साल पुरानी जी की टर्बाइन आज भी वर्किंग है। लेकिन पहाड़ी एरिया होने के कारण से देयर वाज नो वे टू इवैक्यूएट दैट पावर। हाउ डू टेक दैट पावर? इफ द पावर इज जनरेटेड एंड वी कैन नॉट evacuate and utilize it for any purpose, then that power is useless. तो जवाहरलाल जी नेहरू ने घनश्याम दास जी को कहा कि आप कोई ऐसी इंडस्ट्री लगाइए जिससे पावर वहीं पे कंज्यूम हो जाए, और उसी के साथ हमारा बर्थ हुआ हमारी हिंडाल्को इंडस्ट्रीज लिमिटेड का, जिसमें पावर इज वन ऑफ द मेन रॉ मटेरियल्स फॉर मेकिंग एल्यूमिनियम। तो उस ज़माने में 58-59 में वो पावर का वहीं पे कंजम्पशन करके एल्यूमिनियम का प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ। लेकिन जो विजन की बात है वो इसकी आगे की बात है। पावर मिल भी गया बहुत सस्ते में, कुछ शायद उस समय 15 पैसे पर यूनिट में पावर मिलता था, और वो लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट गवर्नमेंट ने किया क्योंकि इन्वेस्टमेंट किया जा रहा था। तो उसमें जब ये मालूम घनश्याम दास जी को पता चला कि ये पावर के लिए अब ग्रिड बन रहा है, इलेक्ट्रिक सप्लाईज धीरे धीरे ऑल्टरनेट सोर्सेज में, ऑल्टरनेट यूजेस में जाने लगेगी। उनको रियलाइज़ हुआ कि मेरा एग्रीमेंट होने के बावजूद शायद ऐसा हो सकता है कि प्रायोरिटी फिर दूसरे यूजेस में दी जाए और हमें पावर नहीं मिले। तो उस ज़माने में उन्होंने एक डिसीजन लिया कि हमें कैप्टिव पावर लगेगा, क्योंकि पावर इंटेंसिव इंडस्ट्री और वो कोल बेल्ट है। तो ही पुट अप अ पावर प्लांट एट अ कॉस्ट ऑफ मेकिंग पावर एट 50 पैसा पर यूनिट व्हेन पावर वाज अवेलेबल एट 15 पैसा पर यूनिट, मच अहेड ऑफ पीपल वुड हैव थॉट कि ये इतना सिली क्यों कर रहे हैं कि हम कॉस्ट बढ़ा रहे हैं। लेकिन उनका विजन ये था, और ये एक्चुअल में यही हुआ कि जैसे ही ग्रिड की कनेक्टिविटी आई, वो पावर दूसरे इम्पॉर्टेंट और क्रिटिकल कंजम्पशन पैटर्न्स में जाने लगा। तो उसके कारण वो पावर की अवेलेबिलिटी कम हुई, लेकिन तब तक वो कैप्टिव पावर प्लांट आ चुका था, और उसके कारण से इतनी बड़ी स्ट्रेंथ हुई कि आज हिंडाल्को इज ऑल्सो वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ एल्यूमिनियम, ऑल्सो इनटू कॉपर नाउ। नेक्स्ट कम्स स्ट्रैटेजी। किसी भी विजन को एग्जीक्यूट करने के लिए उसकी स्ट्रैटेजी चाहिए। ऐसे मैंने कहा कि जैसे पर्पस को रियलाइज करने के लिए प्रॉफिट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट मोटिव, ग्रोथ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बट उसको कन्वर्ट करने के लिए एक स्ट्रैटेजी चाहिए, और वो स्ट्रैटेजी आपकी ऐसी होनी चाहिए सस्टेनेबल है, यू कैन फेस द कॉम्पिटिटिव प्रेशर्स। उसके भी कुछ आपको उदाहरण देता हूँ, अगेन हमारे ग्रुप से ही। जब आदित्य बिरला जी ने आदित्य बिरला ग्रुप का, आज का नाम आदित्य बिरला ग्रुप है, उसमें बिरला ग्रुप ही कहा जाता था, चार्ज लिया, तो वेरी एम्बिशियस पर्सन, an MIT graduate from US, he wanted to expand, but that was a license raj, 80s, mid 80s or towards 90s, early, even before the reforms came. And he realized that it is very difficult to get a license to expand, to make new products in India. उन्होंने आसपास की कंट्रीज को देखा, तो he realized it is much easier to set up industries in Thailand, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस। और उस समय आदित्य बिरला ग्रुप का फर्स्ट फुटप्रिंट आउटसाइड इंडिया है, और वो भी इजी नहीं था, चैलेंजेस थे, क्योंकि फेरा के रेगुलेशंस थे, यहाँ से आप इन्वेस्टमेंट्स नहीं कर सकते थे। तो उसका भी वे आउट किया गया कि वी विल सप्लाई द मशीन्स दैट आर रिक्वायर्ड टू मैन्युफैक्चर दोज प्रोडक्ट्स एज एन इक्विटी इन्वेस्टमेंट फॉर दोज वेंचर्स। और इस तरीके से हमारा फर्स्ट फुटप्रिंट आदित्य बिरला ग्रुप का आउटसाइड इंडिया चालू हुआ, थ्रू दैट स्ट्रैटेजिक इनिशिएटिव टू गो आउटसाइड इंडिया। सिमिलरली एल्यूमिनियम में हमारा अपस्ट्रीम बेस मेटल में प्रोडक्शन कैपेसिटी थी,
but लेकिन it had a very high fluctuations in relation to LME, London Metal Exchange के prices के कारण से बहुत fluctuating परफॉर्मेंस होता था, बढ़ गया तो अच्छी प्राइसेस हो गई, कम हो गया तो उसका परफॉर्मेंस खराब हो गया कंपनी का। तो उसमें ये रियलाइज किया गया कि अनलेस वी गो डाउनस्ट्रीम which is less vulnerable to price fluctuation, we will not have a very steady growth and cash flows to grow further. तो हमारे current chairman ने post he took over from early demise of our late chairman Shri Aditya Birla, one of the first acquisitions that was done was in a downstream company which was called Indal in India. और उसी के कुछ साल बाद one of the largest acquisition internationally was Novelis, which is the largest producer of recycled aluminum in the world. It sources almost 65% of the sustainable cycle process of manufacturing or use of products है, वो already उसमें था। उसका acquisition करने से एक इतनी बड़ी strength हिंडाल्को को मिली कि उसके performance में आप जो लोग track करते होंगे, you would have seen post that it has become more stable and it became more robust. And generation or very latest news is that it has announced an expansion of 45,000 crores into aluminum and copper business. So these are strategic moves which enabled this business to grow from a very low, humble beginning, and when our current chairman took over, it was about $3 billion. It is currently $65 billion in top line. Last but not the least is execution. किसी भी strategy को हम जब तक और हम जैसे एग्जीक्यूटिव्स, हमारे सीनियर्स, हमारे बहुत सारे लोग अगर उसका पार्ट ना हो तो उस एग्जीक्यूशन को जब तक हम ग्राउंड में नहीं लाएं, उसका एक बिजनेस केस नहीं बना के उसके रेगुलर रेवेन्यू जनरेशन नहीं करें, उसकी प्रॉफिट्स नहीं आए, ग्रोथ नहीं आए, इन एडिशन टू द अदर एक्टिविटीज लिंक टू आवर पर्पस, तब तक वो उसके बेनिफिट्स नहीं मिलते। तो एग्जीक्यूशन में एक बहुत एलिबरेट सिस्टम है। I am one of the product of that, which has started from a management trainee as from this organization in this group and rose up to the current role as CEO of Centurion का। बहुत सारे again एक दो आपको cases बताऊंगा। I hope I'm not exceeding my time, but I'll just take another two minutes. हमारा जो सीमेंट का बिजनेस है, again that is the largest business in India, और एक्विजिशन तो होते ही हैं, लेकिन जो ग्रीन फील्ड में एक नॉर्मल टाइमलाइन होती थी कि उसको एक प्रोडक्ट को एक प्लांट को लगाने में कम से कम 24 से 30 महीने का टाइम लगता है। हमारे एग्जीक्यूटिव, हमारी टीम ने उसका एक चैलेंज लिया और जो हमारा एक धार सीमेंट प्लांट आया मध्य प्रदेश में, उसको 14 मंथ्स में कमीशन किया। सो दीज आर काइंड ऑफ एंड देयर आर लॉट ऑफ प्रोसेसेस व्हिच आर aligned to that to ensure that the right talent comes to the top and are part of the execution team. Similarly, आप हमारा जो viscose staple fiber business है, and I'm sure as consumers आपने देखा होगा कि लीवा ब्रांड को प्रमोट किया गया ताकि जो Intel Insight की जो स्टोरी थी in computers, that same लीवा becomes a story in our products when we buy any garment from any showroom. So that लीवा had become a very highly successful, again driven by the executives. ये तो रहा आदित्य बिरला ग्रुप की जर्नी, लेकिन मेरी कुछ पर्सनल लर्निंग्स हैं, एंड आई फील स्मॉल व्हेन आई स्पीक बिफोर यू बिकॉज ऑल ऑफ यू आर वेरी सक्सेसफुल बिजनेसमैन, बट नेवरदलेस लेट मी शेयर फ्यू, और हम लोग उसको फॉलो भी करते हैं। इफ इट वर्क्स एंड इफ इट इज हेल्पफुल टू यू, आई एम श्योर कुछ लोग इसका बेनिफिट लेंगे। सबसे पहले तो we need to revisit our strategy at regular intervals. It could be a year, 2 years, and look at the vision, the value chain, कि उस प्रोडक्ट में रेलेवेंस है कि नहीं, उसका प्रॉफिट पूल क्या है, क्योंकि वर्ल्ड इतना डायनामिक है कि ये नहीं कहा जा सकता कि जो कल की सक्सेस स्टोरीज है वो आने वाले कल में भी रही, और उसको रिविजिट करके टाइमली और बिफोर टाइम प्रोएक्टिवली उसमें चेंजेस करें तो उसका बेनिफिट, और वही बिजनेस सर्वाइव करते हैं विद चेंज ahead of time. Second is we should look at businesses. हमारे मुझे पूरा विश्वास है कि कुछ businesses शायद 2-3 जनरेशन में चल रहे होंगे, लेकिन उनको विदाउट इमोशंस देखना पड़ता है। कई बार डाइवेस्ट करना बहुत मुश्किल होता है कि हमारे साथ हमारे दादाजी ने बिजनेस लगाया था, लेकिन हम इसको कैसे बेचते हैं, कैसे बंद करते हैं। लेकिन अगर उस बिजनेस में
आगे हमें वैल्यू नहीं लग रही है तो इट इज़ बेटर टू हैव अ वेरी स्मूथ एग्जिट दैन टू कंटिन्यू एंड एग्जिट एट अ टाइम व्हेन इट बिकम्स डिफिकल्ट, both for the entrepreneurs and the owners, but also for the people working with you. Third is, I'm sure आप लोगों ने देखा होगा कि you will have times when business are doing very well, and मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये रहा है कि ऐसे समय में हमें जो हमें एक्सेस या सरप्लस पैसा मिला है because of good business cycles या certain good deals, that should be invested in reducing cost. Because competition is not only from India, we are now global, and हमें जब तक cost का advantage नहीं रहेगा to survive in such a complex world and competitive world, we cannot do that. So a portion of it should go for reduction in your cost, whether it is energy cost, it is manpower cost. Can you make your fixed cost to be variable so that at downturns we are able to survive those cycles and wait for a good turn to come. Lastly, benchmarking is very important. हम जिस इंडस्ट्री में रहते हैं, कोई भी इंडस्ट्री ऐसी नहीं है जिसमें सीवियर कंपटीशन नहीं है. So when we benchmark with the best, that gives us what is the gap or where we stand or what is the kind of advantage we have, and that how do we sustain that is through management and strategic decisions that ensure that we continue to remain at least on the top quartile or on the top of the performance parameters. Lastly, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन केवल ओनर्स या फ्यू पीपल से नहीं होता है, उसमें काम करने वाले लोगों के साथ होता है, और उनका शुक्रिया, उनकी एप्रिसिएशन बहुत क्रिटिकल है. मुझे हमेशा फीडबैक मिलता था कि मैं अप्रिशिएट कम करता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ, और वी शुड स्टार्ट विद अप्रिशिएटिंग आवर better halves or wives, spouses. So I thank because without their support, we cannot be successful. We cannot spend time beyond the normal office hours. And उसके अलावा जब वो appreciation मिलता है तो they give more than what is desired in a normal operating 8 hours. So I'm sure, I hope my talk has been useful. There are some ideas which some of you can take, but as I said, it is more a learning for me. I was very impressed with the activities of MIG and the time and the effort that is put in addition to the businesses that you are handling. It is really remarkable. Wish you all the best and a great year, and saw activities that has been done last year, I'm sure, and wish you, the entire new board, a great year ahead, full of activities and new learnings for all the members. Thank you so much. Sir, you have helped reinforce the core values of MIG. हम आपको आश्वस्त करते हैं कि आपकी बताए 4 pillars को ध्यान में रखकर ज़रूर इंस्पायर होंगे. We better appreciate the meaning and importance of purpose, vision, strategy and execution. And above all, the need to stay in tune with times and knowing where we stand and being objective in business. Your advice of being cost focused is well taken. Thank you for sharing your experience with us and giving us an opportunity to learn. After the words of advice from Suresh ji, let us turn our ears and attention to listen to our esteemed chief guest, Dr. Shrikant Ji Karwa. Once again, I'll request Dia to introduce him to us. It is a rare privilege for me to welcome today's chief guest, a visionary scientist, a pioneering industrialist, and a compassionate changemaker, Dr. Shrikant Ji Karwa. His journey began in Sangamner, where his mother, a social worker, founded a school where Shrikant Ji was the first student. She was the fountain of knowledge who instilled in him a love for learning and finding purpose beyond wealth. His father, a spiritual man deeply rooted in his morals and values, offered him freedom with one condition: to do something meaningful. From being a topper at Taluka level, he went on to pursue a PhD in catalytic hydrogenation from ICT. In 1987, he founded Tata Pharma, bringing a new age of molecule-efficient manufacturing, and turned a barely practiced technology into a scalable, green industrial powerhouse, built entirely on in-house innovation and sustainable practices.
but his greatest achievement might be at home. A family of chemical engineers who grew up at the factory he built. His two daughters, Shruti and Shweta, and his son Anand, each trained in chemical engineering, now carry forward his legacy at Tata Pharma. His wife Manju ji supported him in business and has accompanied him today to grace us with her presence. As chairman of the South Dwarka Bhai Karwa Trust, the Dr. Shrikant Karwa Foundation, and the Sinnar Enviro Foundation, he is also transforming lives through initiatives for health, education, women empowerment, elder care, and sustainable environmental projects. Multiple awards from the Sinnar Udyog Bhushan 2005 to the Green Chemistry Award 2009 for Sustainable Innovation, and a hat-trick for the Excellent Vendor Awards for unmatched reliability and consistency are proof of a life that is rooted in values and committed to progress. Please join me in warmly welcoming our chief guest, Dr. Shrikant Karwa. Sir, please honor us with your thoughts and guidance. माननीय मंच, श्रीमान सुरेश जी सदानी और MIG के सब सदस्य और उनके परिवार, सबसे पहले तो नवनिर्वाचित MIG के प्रेसिडेंट श्री श्यामजी भुताड़ा का और उनके कार्यकारिणी का बहुत बहुत अभिनंदन। फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर्स जो एक छलांग लगाकर खुद को एक नए ऑर्बिट में डालता है, उसके उनके पुरुषार्थ का आप सभी ने गौरव यहाँ पे जो किया है, मुझे विश्वास है कि ये गौरव उनके आगे के प्रयत्नों को नई ऊंचाई दिखाएगी और उसको वो साथ रहेंगे। कुछ सालों पहले मुझे भी ये अवार्ड डिक्लेयर किया गया था, मगर बाद में ध्यान में आया कि मेरी उम्र 40 साल के ऊपर है, तो अवार्ड कैंसिल हो गया। तब नहीं, मगर आज आपने मुझे यहाँ पे हाजिर होने का जो एक मौका दिया है, मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। मुझे मालूम है कि MIG के जो भी एंटरप्रेन्योर्स हैं, उन्होंने एंटरप्रेन्योर्स की एक लंबी लड़ाई लड़कर अपनी अपनी जगह बनाई है। इसका मतलब ये होता है कि उन्होंने ह्यूमन एक्सेलेंस के एक उच्चतम श्रेणी में, ऊपर के श्रेणी में खुद को दर्ज कर लिया है। आप भी दुनिया के प्रशंसा के पात्र हैं। अच्छा लगता है कि MIG में माहेश्वरी समाज के इतने परिवार उद्योग जगत से साथ में संगठित होकर एक दूसरे के सक्सेस के लिए प्रेरित करने के लिए, प्रेरणा बनने के लिए तत्पर है। कहता है ना कि एक आदमी ने शिकार की तो भोजन मिलता है, और सब ने झुंड में शिकार की तो शायद मेजबानी मिलती है। आज के दुनिया में पैसे बनाने, धन बनाने के इतने रास्ते खुल गए हैं कि एक दूसरे से स्पर्धा करने के बजाय एक दूसरे के साथ में, एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए आप आगे बढ़ेंगे तो सभी सफल होने की संभावनाएं काफ़ी बढ़ जाती हैं। मैं MIG के आपके सभी कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत उनका अभिवादन करता हूं कि आज 50 साल से आप साथ में रहकर आपकी ये लेगेसी आपके दादाजी से शुरू जो हुई है वो अभी भी आगे चला रहे हैं। मैं भी एक फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर हूँ। मैं संगमनेर में हमारी एक छोटी जॉइंट फैमिली थी 20-25 लोगों की। मेरे पिताजी गांव में उनके वसूलों के लिए और उनके एथिकल व्यवहार के लिए जाने जाते थे। मेरी माँ, जिनके स्मृति में लाहौरी हॉस्टल में ताई टावर का जो समर्पण हुआ, वो एक वोरेशियस लीडर थी। मारवाड़ी समाज में जनरली रीडिंग की हैबिट्स काफ़ी कम थी उस जमाने की। मैं 1960s की बात कर रहा हूँ। पर हमारे परिवार की एक करवा लाइब्रेरी थी जो हमारे दादाजी ने डोनेट की थी,
उस लाइब्रेरी में हमें स्पेशल एक्सेस था, तो कोई भी बुक्स घर पे आके आप पढ़ सकते थे। साथ में 4-4 बुक्स लाते थे। माय मदर यूज्ड टू ब्रिंग सो मेनी बुक्स एट द होम, सबको डिस्ट्रीब्यूट करके उसको पढ़ाती थी, और उसमें के जो विचार है उसमें रात में चर्चा होती थी। इस चर्चा में से हुआ ऐसे कि घर में हमेशा अध्यात्म है, पॉलिटिक्स है, वर्ल्ड अफेयर्स है, समाजकारण है, बड़ी बड़ी पर्सनैलिटीज़ हैं, उनके बारे में हमेशा उनके अच्छे गुण क्या है इसके बारे में चर्चा होती थी। आदमी ने ज़िंदगी में क्या करना चाहिए एंड व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ लाइफ, इस पर भी काफ़ी चर्चा होती थी। उसका ऐसा हुआ कि इसके कारण जीवन में सिर्फ पैसा ही सब कुछ है, ये जो जीवन की एक भावना है वो हमारे परिवार से काफ़ी कोसों दूर रही। 10th, 11th और 12th में संगमनेर तालुका में मैं रैंक होल्डर था। उसके कारण बाकी तो सब अपने अपने बिजनेस में लगे थे। मैं एक स्टडी में कैसे अच्छा निकल गया भगवान जाने, मगर उसके कारण होता ही माँ का काफ़ी उस पर इन्फ्लुएंस रहा है, नो डाउट अबाउट इट। तो घर में ऐसा तय हो गया था कि अभी श्रीकांत कुछ अपने बिजनेस में आएगा नहीं, उसको तो अपनी करियर बनाने की है। पर उस समय सीखा तो इंजीनियरिंग करेगा, प्रोफेशनल करेगा, किधर तुम्हें नौकरी करेगा, दैट वाज द टोटल आइडिया। मगर अपने समाज में उस वक्त नौकरी करने का प्रचार नहीं था, प्रचलन बिल्कुल ही नहीं था। नौकरी करने वाले की शादी होना मुश्किल हो जाता था। That was the situation. If you know the senior times of 60s and 70s, भाई लड़का वो संगमनेर में तो आप मालूम है कि every home was in business। घर में संगमनेर में नौकरी करना है मालूम नहीं था। फर्स्ट टाइम मैं जब एजुकेशन के लिए मुंबई गया तो गाँव वालों ने पूछा घर में कुछ प्रॉब्लम है क्या भाई, क्यों भला जा रहे, घर में सब है ना, संभालो अपना घर का काम संभालो, कुछ जाने की जरूरत लग रही है आपको। So we were the very first people who left Sangamner for our education, and that was the time we, from that onward, the time changed actually. A lot of changes happened in the society. Education में काफ़ी लोग आगे गए। अभी तो बात ही पूरी चेंज हो गई है, अभी उल्टा हो रहा है शायद। शादी तो भाई कोई इन्फोसिस में होगा, एक्सेंचर में होगा तो करने के लिए लड़कियाँ तैयार है, और पुणे और मुंबई में है तो सवाल ही नहीं उठता है कुछ। So the changes have surely happened. But after my education, 1981 में मैंने मेरी केमिकल इंजीनियरिंग पास की, और केमिकल इंजीनियरिंग पास करने के बाद रियली मेरे लाइफ का एक्सप्लोरेशन जर्नी शुरू हुआ। घर पर तो जा नहीं सकता, उन्होंने ऑलरेडी एज्यूम किया था कि ये गया घर से अभी। अरे पहले घर पे अपने घर में जॉइंट फैमिली मालूम है इतने सारे क्लेमेंट रहते हैं कि ये गया तो सबको लगा कि एक क्लेमेंट तो कम हो गया घर में। दैट इज वेरी गुड। सो तो करना क्या है, ये बड़ा प्रश्न सामने था। तो मैंने एक्सप्लोरेशन फेज में मुझे हिंदुस्तान लीवर की भी ऑफर मिली थी, पर हिंदुस्तान लीवर की उस टाइम पे 1800 रुपये सैलरी थी। वो छोड़ के मैंने आरसीएफ में 1100 रुपये पे मैनेजमेंट ट्रेनिंग का जॉब लिया। कारण यही था कि कुछ तो भी सीखना है, सिर्फ पैसा कमाना क्या नहीं है, ये तो पक्का था मन में, कुछ तो भी सीखना है। तो आरसीएफ एक गवर्नमेंट कंपनी थी जहाँ पे 13 से 15 इम्पोर्टेड टेक्नोलॉजी के प्लांट्स थे। तो मुझे एक ही उसमें चांस लगा कि जब मैं उधर जाऊँगा तो गवर्नमेंट कंपनी ऐसे रोक ठोक तो है नहीं गिरला में जैसे होंगे सर कि इधर क्यों गया उधर गया, वो तो नहीं है। तो आई वेंट टू आरसीएफ एंड आरसीएफ वाज रियली सो नाइस टू अस। As a management trainee, they wanted to develop further future directors out of this management training. जैसे हिंदुस्तान लीवर में रहता है कि they take management training and develop them to the future CEOs, and जैसे सदानी जी management training बोल के लगे and he become today CEO. That was the every organization has to follow that कि future succession plan तो बनाना ही है। तो उस तरफ से हम management training बोल के हमको लिया। I was a leading management trainee. सब जन बोल रहे थे कि बट ये लड़का आगे मैनेजिंग डायरेक्टर बनेगा आरसीएफ का, मगर वो होना नहीं था।
RCF 11 महीने रहने के बाद मैंने सोचा कि ये RCF में इतनी भारी भारी टेक्नोलॉजी है और मुझे कोई व्यवसाय करने का है, तो इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट तो मैं कर ही नहीं सकता है, तो मुझे कुछ तो भी ऐसा सीखना चाहिए कि जिससे मैं मेरा कुछ काम कर सकूं। क्योंकि घर में से पैसे मिलने का ज़रा प्रावधान ज़रा कम ही था कि हर एक जन those were the times of 70s and 80s and they were not like the progress what we have today। काफ़ी तंगी चढ़ी रहती थी हर एक जगह पे, और घर में 3-3 शादियाँ 4-4 शादियाँ हर एक साल, तो वो एक बड़ा प्रेशर घर में रहता था। सो देन मैं वापस डिसाइड किया कि आगे करने का क्या। तो ऐसा है, ICT का नाम आपको मालूम होगा, मुझे आज इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी है, उस टाइम यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी था। उस वक्त दुनिया में के एक बड़े महर्षि और ब्रह्मश्री उनको जो कहा जाते हैं, ऐसे लोग थे। जैसे आपके पुणे के आर्य माशेलकर, वो हमारे कॉलेज के, मुकेश अंबानी हमारे कॉलेज का है, जो मुझे 2 साल सीनियर था। पर हमारे जो प्रोफेसर थे MM शर्मा, वो तो दुनिया भर उनका नाम था, बिकॉज ही वॉज द डायन ऑफ द केमिकल इंजीनियरिंग। आपने सर सुना होगा, प्रोफेसर MM शर्मा आज भी एक्टिव है, इंडस्ट्री को गाइड करते हैं, एंड ही वॉज द इंस्ट्रूमेंटल फॉर जामनगर रिफाइनरी टू एडवाइज मुकेश अंबानी कि भाई इंडिया में इतना शॉर्टेज रहने वाला है आपको और इतना बड़ा फ्यूचर है पेट्रोकेमिकल्स का, सो यू शुड गो अहेड विद द लार्जेस्ट पॉसिबल रिफाइनिंग कैपेसिटी। तो ऐसे ये यूनिवर्सिटी में जाने के बाद अभी करना क्या है, तो जो रिसर्च गाइड थे उनको जाके मिला कि सर नौकरी तो मुझे करना नहीं है, मैं हूँ मारवाड़ी, नौकरी तो होनी नहीं मेरे से, तो मुझे कुछ तो भी ऐसा सिखाइए, ऐसा सीखने की इच्छा है जिसके साथ मैं मेरी इंडस्ट्री चालू कर सकूँ। सो वैसा तो जनरली जो कॉलेज में प्रोफेसर रहते हैं उनका पहला पर्पज रहता है ज़्यादा से ज़्यादा रिसर्च करो, ज़्यादा से ज़्यादा पेपर पब्लिश करो, और दुनिया भर उनके जो अवार्ड रहते हैं उन पे उनका फोकस रहता है। बट देन व्हेन ही सॉ माय इंटेंसिटी ऑफ not doing research for only sake of having some research papers or degree, he thought, because he came just from the Cambridge, he was a master in molecular sieves technology for diffusion, जो पेट्रोलियम इंडस्ट्री में यूज़ किए जाते हैं जियोलाइट्स, उसमें काफ़ी मास्टरी थी उनकी, उनका काफ़ी रिस्पेक्ट था वर्ल्ड में। तो उनके दिमाग में, he was an expert on catalytic chemistry basically, so catalytic chemistry में उनके दिमाग में एक सब्जेक्ट रहा था कि कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन, ये जो यूनिट ऑपरेशन है वो सिर्फ पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री में चलता है, ऑयल इंडस्ट्री में चलता है, मगर फाइन केमिकल इंडस्ट्री में उसका उपयोग इंडिया में बिल्कुल नहीं होता था। द रीजन वाज दिस वाज अ टोटली केमिकल इंजीनियरिंग ड्रिवन इंडस्ट्री, और ये इंडस्ट्री जो फाइन केमिकल इंडस्ट्री, वो सब मैं बताऊं कि जो गुजराती लोग हैं, मारवाड़ी लोग हैं, जो उनके पास सिर्फ एसेट्स है, पैसा है इंडस्ट्री में लगाने को, और कहीं तो उसमें से एक टेक्निकल आदमी लाएंगे और उनका इंडस्ट्री चालू करेंगे, ऐसी इंडस्ट्री थी। तो ये फाइन केमिकल इंडस्ट्री में जो भी रिडक्शन के काम होते थे वो सब केमिकल रिएजेंट से होते थे, उसके कारण पोल्यूशन थ्रू आउट। आप कभी याद होगा वापी और तारापुर इतने पोल्यूटेड एरिया थे उस टाइम पे। आई एम टॉकिंग अबाउट 80s and 70s व्हेन आई वाज डूइंग एजुकेशन। मैं भी जॉब के लिए 2-3 बार और इंडस्ट्री देखने के लिए उधर जाता था, तो आँख में पानी आने के सिवा पानी आता था, इतना पोल्यूशन था वहाँ पे, एंड आपको दिखेगा नहीं सामने क्या है। द काइंड ऑफ इंडस्ट्री, केमिकल इंडस्ट्री वाज देयर इन 80s वाज जस्ट ऑफुल। माय प्रोफेसर, ऑफ कोर्स ये बौद्धिक लोग हैं, ये दुनिया के आगे सोचने वाले लोग हैं, उन्होंने एक बताया कि भाई ये कैटालिटिक हाइड्रोजन जो टेक्नोलॉजी है बड़े स्केल पे तो चल रही है, पर फाइन केमिकल इंडस्ट्री में इसका कोई उपयोग नहीं हो रहा, बिकॉज फाइन ये मोस्ट इट इज मोस्ट पोल्यूशन फ्री टेक्नोलॉजी एंड मोस्ट कॉस्ट इफेक्टिव टेक्नोलॉजी। इसमें सिर्फ हाइड्रोजन यूज होता है और बाय प्रोडक्ट बोल के पानी तैयार होता है ज़्यादा से ज़्यादा। तो ये टेक्नोलॉजी फाइन केमिकल इंडस्ट्री में आपने यूज करना चाहिए, यानी ये टेक्नोलॉजी जैसे एवरीवेयर इन द वेस्टर्न वर्ल्ड वो प्रचलित है,
because the Western world has developed this technology. Germany has been the pioneer for all technologies in chemical engineering or chemical industry. तो इसमें क्या था, केमिस्ट्री तो इन्वॉल्व था, उसमें कैटलिस्ट भी इन्वॉल्व था, उसमें इंजीनियरिंग भी इन्वॉल्व था, एंड इट वाज हाई प्रेशर इंजीनियरिंग। मुझे याद है, आपने डॉक्टर गड़ा जी का नाम सुना होगा, डोंबिवली में। He is a big scientist. He has been doing lot of pesticides and products. उनको जब मैं जाके बोला कि सर कैटरिंग हाइड्रोजन के बारे में बता रहा कि मैं जब एक प्रोडक्ट डेवलप किया जो वो अलग तरीके से बनाते थे, तो आई हैव टोल्ड हिम, सर व्हाई यू डोंट गो फॉर द कैटलिटिक हाइड्रोजनेशन प्रोसेस विच इज पोल्यूशन फ्री। आपके इसमें तो ब्रोमीन यूज होता है, रिडक्शन होता है, आयन एसिड यूज करते हैं आप। ही सिंपली सेड, मैं किचन केमिस्ट्री वाला आदमी हूँ, आई डोंट वांट एनी केमिकल इंजीनियरिंग इन्वॉल्व, हाई प्रेशर टेक्नोलॉजी को तो मैं डरता हूँ। एंड हाइड्रोजन हैंडल करना, उसमें देयर आर लॉट ऑफ प्रॉब्लम, बिकॉज हाइड्रोजन लोगों को बोलते हैं कि हाइड्रोजन बॉम्ब ही है, ऐसा समझते थे। सो दैट वाज अ वेरी टिपिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाइड्रोजनेशन with the best of the people available in the country. So राजेंद्र कृष्ण जब मुझे बताया कि कैटलिटिक हाइड्रोजनेशन का प्रचार इस कंट्री में होना चाहिए, दिस इज आवर नेशनल ड्यूटी एज ए इंस्टीट्यूट टू प्रमोट दिस टेक्नोलॉजी। यानी आज तक कोई ऐसा मेरे पास स्टूडेंट आया नहीं जो ऐसे स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के लिए काम करना चाहता है, यानी ही हैज अ एस्पायरेशन टू गेट इनटू समथिंग his own business. So you work in catalytic hydrogenation. That was his advice to me. And then we started working in the catalytic hydrogenation. At that time, मुझे इतना ध्यान में आया कि इस प्रोडक्ट ये जो टेक्नोलॉजी मैं यूज करूँ, मार्केट में लाऊँ ये टेक्नोलॉजी, तो मुझे वैसे कंपटीशन तो है ही नहीं भारत में, बिकॉज एनीबडी हु इज डूइंग बाय केमिकल रिएक्शंस, उसकी कॉस्ट और इसके कॉस्ट में कम से कम 30% का फर्क तो होना ही था. सो दैट वाज द एडवांटेज आई कुड सी. यानी उस टाइम पे जब ये कॉस्ट एडवांटेज सबको मालूम होने के बाद भी कोई करना नहीं चाहता था, बिकॉज एवरीबडी वाज फीलिंग कि ये एक्सप्लोजन हो जाएगा, क्यों रिस्क लेने का है, वैसे ही चल रहा है, पैसा मिल रहा है, एवरीथिंग इज हैपनिंग, दैट इज ओके. सो इस टेक्नोलॉजी में काम करते करते जब मैं 4 साल यूनिवर्सिटी में मेरा वास्तविक किया, फिर ध्यान में आया कि इस टेक्नोलॉजी का पोटेंशियल तो है, कोई बनाता ही नहीं है, तो ये वी कैन यूज एंड दैट 30% एडवांटेज वी कैन एंजॉय. ये अपने को इंडस्ट्री में सीधा एंट्री देगा. मे बी आई विल बी द फर्स्ट पर्सन टू गेट इनटू दिस टेक्नोलॉजी. एंड यूनिवर्सिटी में मैं पहला स्टूडेंट था जो इस पे काम करने को शुरू किया. तब तक कोई कैटेगरी ग्रेजुएशन पे काम हमारे कॉलेज में हुआ नहीं. ये काम करते करते एक तो ध्यान में आया कि इंडस्ट्री तो बन जाएगा, मगर इंडस्ट्री चलाने के लिए सिर्फ टेक्निकल नॉलेज नहीं लगेगा. हमेशा हमारे लोग बोलते थे कि इंडस्ट्री चलाने का तो 5% टेक्नोलॉजी लगता है, बाकी तो काफ़ी कुछ बातें चल सकती है. तो आई वॉज टोटली फ्रॉम ए ट्रेडिंग फैमिली फ्रॉम संगमनेर. तो क्या नॉलेज लगेगा इसका अंदाज लेने के लिए मैं बाकी काफ़ी चीज़ों में काम करते रहा. मैंने एसिडोब्लिक का कोर्स साइमल्टेनियसली PhD करते करते ज्वाइन कर लिया. बाद में इंपोर्ट एक्सपोर्ट के कुछ कोर्सेज चलते थे अमेरिकन सोसाइटी के, वो ज्वाइन कर लिए. फिर अकाउंटिंग का स्टडी किया. अकाउंटिंग स्टडी करने के लिए मैंने मेरा कॉलेज का हॉस्टल छोड़ा. एक कपूर हॉस्टल बोल के गुजराती लोगों का हॉस्टल था माटुंगा में. उस हॉस्टल में जाके रहा 1 साल के लिए. मेरा मामा का लड़का भाई वो हॉस्टल में था, उसके जरा मेरा नंबर लगा दिया उधर. आई प्रीफर टू मूव फ्रॉम द इंजीनियरिंग कॉलेज टू one college where all CAs were there, only CAs. There was nobody else. I was the only engineering student in that. तो उसका एडवांटेज मुझे ऐसा मिला कि लंच टेबल पे रूम में हर एक जन शेयर मार्केट के बारे में बात कर रहा है, अकाउंटिंग में एडजस्टमेंट की बात कर रहा है, टैक्सेशन की बात कर रहा है, इसने कैसा गफला किया, इसने कैसा गफला किया, ये सब बातें जब सामने आती है. एंड फिर ऑल दैट अकाउंटिंग के रूल्स एंड रेगुलेशंस, वो रेशियोज क्या रहते हैं, इसका थोड़ा एक अंदाज आने लग गया.
सिर्फ बोली भाषा में बात करते हैं लोगों के साथ तो जल्दी सीखते हैं, उनके साथ रहते हैं तो पढ़ा उसका डेप्थ मालूम पड़ता है। तो ये मालूम होने के लिए मैंने काफ़ी उस टाइम पे मेरा पहला 1 साल ये बातों में डाल दिया, ऐसा लगता है मुझे। फिर मेरे रिसर्च गाइड बोले कि रिसर्च कब होगा भैया तेरा, हाँ ये तू क्या कर रहा है। सो आई यूज्ड टू देन वर्क इन द इवनिंग्स एंड देन सैटरडे एंड संडेज एंड वर्क फॉर ऑल दिस एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़। जैसे कि मुझे केमिस्ट्री सीखने का था, केमिस्ट्री मेरी कच्ची थी, बिकॉज केमिकल इंजीनियरिंग में केमिस्ट्री बहुत कम होता है। सो आई यूज्ड टू गो टू केमिस्ट्री डिपार्टमेंट एंड वर्क फॉर माई फ्रेंड्स जो केमिस्ट्री के PhD स्टूडेंट्स थे। वो उनसे बात करते करते केमिस्ट्री थोड़ी मैं ये समझा कि मैं मारवाड़ी हूँ, मैं मारवाड़ी सीखा कैसे। तो मैं उनका शेख मालवा ने मुझे एक बार पूछा था कि भैया तुझे बेंगलोर IIM में एडमिशन मिला, तू लिया क्यों नहीं। मतलब अरे मारवाड़ी तो अपन मारवाड़ी है, अपने को क्या सिखाने का, अपने ब्लड में है, तो IIM का सीखेंगे अपन। दैट वाज माय आंसर इंस्टेंटली आफ्टर माय ग्रेजुएशन, दैट हैज हैपेंड। बट देन वो सीखना जरूर था टेक्नोलॉजी, जो मैं इंस्टीट्यूट छोड़ने के पहले मुझे सीखना था, क्योंकि बाहर जाने के बाद ये टेक्निकल नॉलेज कहीं मिलेगा नहीं, इसका मुझे गारंटी था। कि बाहर जाए तो अपने समाज में वापस घर में आ गए तो पैसा, शादियाँ एंड तो त्योहार, इसके सिवा अपने को ज़्यादा संगमरमर में तो आपको मालूम है कितना जोर से चलता है हर एक चीज़। वैसे संगमरमर में आने को बंदी तो थी मुझे, मगर मैं इसमें कॉन्सेंट्रेट करके मेरे प्रोफेसर के इंडस्ट्रियल कंसल्टेंसी थे, उनको इंडस्ट्री में जाके मदद करता था। मेरे जो स्टूडेंट्स हैं, सर के स्टूडेंट्स थे, उनको मदद करता था, उनकी इंडस्ट्री विजिट्स अरेंज करता था। इंडस्ट्री विजिट करने के बाद इंडस्ट्री में क्या देखने वाले हैं इसका थोड़ा सर्वे करते थे, हम लेक्चर्स लेते थे। तो इंडस्ट्री में जाने के बाद ये टेक्नोलॉजी क्यों यूज़ की, वो टेक्नोलॉजी क्यों यूज़ की, इस पर हमेशा एक डिबेट होने के बाद ही हम इंडस्ट्री विजिट को जाते थे। और उसके कारण जो भी इंडस्ट्री विजिट को आते थे, जो हम पेशेंट पूछते थे, तो जाते जाते उनके इंजीनियर्स और उधर के जो मैनेजर रहते थे, भाई इन लोगों को अपने को मालूम नहीं इतना इंडस्ट्री का नॉलेज, टेक्नोलॉजी का मालूम कैसे है। सो दैट वाज लॉट ऑफ एफर्ट वी पुट एज आवर ग्रुप कि ये सीखना चाहिए। उधर जाने के सिर्फ जाके आप क्या बिल्डिंग देके आएंगे, टोटल सॉफ्टवेयर क्या है, उसका आत्मा क्या है, वो नहीं समझ देंगे तो आप क्या इंडस्ट्री देखेंगे और क्या समझेंगे। सो ऑल दिस ऑफ एक्टिविटी हैज एडेड लॉट ऑफ वैल्यू टू माई लाइफ। बाद में मैंने मेरे रिसर्च में पैरासिटामोल की टेक्नोलॉजी डेवलप की थी, उसकी कमर्शियल वैल्यू काफ़ी थी, नई टेक्नोलॉजी थी। पैरासिटामोल तो पहले से बनता था, पर मैंने नई टेक्नोलॉजी बेस्ड ऑन कैटेलिटिक हाइड्रेशन डेवलप की थी, उसकी कमर्शियल वैल्यू काफ़ी थी। एंड उसके कारण मुझे जॉब ऑफर्स भी आने लग गए थे कि भाई तुम ज्वाइन हो जाओ। पैरासिटामोल के बड़े बड़े प्लेयर्स थे, उनको जब मालूम पड़ा कि दिस पेपर्स माई पेपर्स वर आउट, दे कॉल्ड मी पर्सनली, दे कॉल्ड आवर प्रोफेसर टू मेक दिस पर्सन जॉइन अस। पर मेरा पहला रिस्पॉन्स था जब प्रोफेसर शर्मा, जो डॉयन ऑफ द इंडस्ट्री समझे जाते हैं, उन्होंने मुझे जब ऑफर दिया, सर बोला सर ये मेरा पिंड ही नहीं है, नौकरी मैं कर ही नहीं सकता, नौकरी करने का सवाल ही नहीं है, मुझे मेरी इंडस्ट्री ही डालने का है। सो विथ दिस थॉट्स आई ट्राई टू गेट फाइनेंस। अभी इंडस्ट्री डालने का तो फाइनेंस चाहिए, तो फाइनेंस लागे कहाँ से। तो उस टाइम हर्षद मेहता का वक्त था, शेयर मार्केट मालूम है आज नीचे गया, उस टाइम हमेशा ऊपर ही जाता था। तो मेरे सिस्टर से मैंने 25,000 रुपये लिए और ये शेयर मार्केट में थोड़ा ट्रेडिंग किया। आई वॉज सो लकी, गॉड हेल्प मी, एंड वो 25,000 के साल भर में 5 लाख रुपए हुए। एंड वो 5 लाख रुपए ही मेरे आगे इंडस्ट्री लगाने में, इक्विटी में काम आए। सो यू नीड nobody gives you money unless you have your own equity capital. But we were lucky to get VC financing after my research. When I presented my research, कि यूनिवर्सिटी से ना बोल दिया, सिकॉम ने ना बोल दिया, तो सिकॉम ने ना बोला तो निराश होकर मैं बाहर आके चर्चिल स्टेशन पे खड़ा था, सामने रोज थिएटर पे देख रहा था, अभी क्या करूँ आगे, इधर से कहाँ जाने का, वापस घर जाने का, कि व्हाट आई डू। तो उसमें मुझे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया IDBI, उसका एक एडवर्टाइजमेंट था। मैंने बोला सिकॉम तो देगा नहीं पैसा, वो उनका कहना है कि आपकी टेक्नोलॉजी अनप्रूवन टेक्नोलॉजी है, अरे आप तो फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर है, आप जैसे लोग बहुत लोगों को पैसा दिए गया, डूब गए हम लोग, आप जाओ। आई वॉज जस्ट लॉस्ट
कि अपन इतना हम 4 साल मेहनत किए, टेक्नोलॉजी डेवलप किए, व्हाट आई डू नाउ नेक्स्ट। पर देखा कि डेवलपमेंट नाम का कुछ तो भी एक बैंक है जो उसको सपोर्ट कर सकता है। उधर से जो निकला वो IDBI के ऑफिस में, किर्लोस्कर बिल्डिंग में IDBI का ऑफिस था, उधर जाके अंदर घुसा। अंदर घुसते ही एक जन को पूछा, सर मैं ऐसा टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट किया, वेदर यू कैन सपोर्ट अस फाइनेंशियली। मेरे नसीब देखो कि उस टाइम वेंचर कैपिटल का फंड जो स्कीम था, जो VP सिंह ने डिक्लेयर कर दिया था, जस्ट उस बजट में हुआ था। ये हुआ 28 फरवरी को और मैं 7 मार्च की बात कर रहा हूँ। एंड दैट विसेफ फंड वाज गिवन टू IDBI टू हैंडल इट प्रॉपरली। तो उन्होंने बताया कि देखो वो कॉर्नर में एक बंदा बैठा है, वो जस्ट IIM अहमदाबाद से पास होके आया था। एंड ही टोल्ड कि उसके पास में जाके बैठा, आई वाज जस्ट एक्सप्लेनिंग कि व्हाट रिसर्च आई हैव डन एंड व्हाट द पोटेंशियल इट हैज। इट वाज माय लक, पॉसिबली अगेन गॉड हेल्प somebody who is keep on trying, you know। मेरे पीछे टेक्निकल एडवाइजर ऑफ IDBI आके बैठे थे, उनके अंडर ये स्कीम था। वो बच्चा उसके अंदर ही आज 1 मार्च से जाके बैठा था। एंड ही लिसन माय कॉन्वर्सेशन विद दिस मैन। एंड उसने मुझे बुलाया, भैया इधर आओ, क्या कर रहे हैं आप? उन्होंने बताया मैं ऐसे आया है। बोला आप प्रोफेसर शर्मा को जानते हैं? बोला वो तो हमारे गुरु है, हमारे हेड ऑफ डिपार्टमेंट है। इमीडिएटली he called and said, भाई ये भैया आया है यूनिवर्सिटी से, आपको ने बड़ी बातें कर रहा है, व्हाट डू यू थिंक? प्रोफेसर शर्मा ने, मैं सुन रहा था, बोले ये भागने वाला घोड़ा है, आप तो गधे पे पैसे लगाते, इसको लगाओ, हारेंगे तो मजा आएगा, बोले ये रेस है, दो उसको पैसा। तो दैट completely changed my life. That one recommendation and one luck of reaching IDBI in time when I most needed it, उन्होंने मेरा नसीब बदल दिया। फिर IDBI ने मेरे कमर्शियल रिसर्च का जो कमर्शियल वायबिलिटी वो चेक किया, एंड देन दे वेंट अहेड एंड फाइनेंस मी। उसके साथ मैंने जो रिसर्च डेवलप किया, टेक्नोलॉजी डेमोस्ट्रेट की, एंड उस टेक्नोलॉजी के बाद मुझे पैसे का कोई कमी नहीं पड़ा। सिकॉम फाइनेंस। तो मेरे 2 दोस्तों को लेकर मैंने सिंदर में मेरी इंडस्ट्री शुरू की। उस इंडस्ट्री में मैं काफ़ी इम्पोर्ट सब्सिट्यूट प्रोडक्ट्स भी प्रोड्यूस किए, डेवलप किए, एंड दोज प्रोडक्ट्स वेर सोल्ड इन इंडियन मार्केट एट हाफ द प्राइस ऑफ इम्पोर्टेड प्रोडक्ट। ये सबको जब मालूम पड़ा तो मेरे पास तो मुझे मार्केटिंग की जरूरत नहीं पड़ी। एवरीबडी से दिस मैन डजंट नो द प्राइस ऑफ व्हाट इज इंटरनेशनल प्राइस, ही जस्ट एड्स हिज प्रॉफिट एंड गिव इट। सो मुझे डॉक्टर रेड्डी से लेके, हेक्स से लेके, एवरीबडी वाज स्टार्टिंग गिविंग मी ऑर्डर्स, एंड आई वाज हैप्पी। आई वाज जस्ट देयर टू क्रिएट माय फुटप्रिंट इन द मार्केट। मैं पैसे के लिए काम ही नहीं कर रहा था, मैं पहले फुटप्रिंट तो तैयार करो, मालूम तो पड़े अपन क्या कर सकते हैं, अपनी खुद की क्षमता क्या मालूम पड़े। तो उस हिसाब से जो ऑर्डर लेते गया, थोड़ा सा प्रॉफिट करते करते वो बढ़ते गया, मालूम पड़ते गया कि इम्पोर्टेड प्राइस इतना है, तो पैसे मेरा भी प्रॉफिट बढ़ते गया। एक्सपीरियंस एड्स ऑन, यू नो, एक्सपीरियंस एड्स ऑन। सो उसके बाद मगर कभी पीछे देखना नहीं पड़ा, बिजनेस बढ़ते गया। हमने 1995 में एक्सपोर्ट शुरू किया। वी स्टार्टेड एक्सपोर्टिंग टू यूरोप, जापान, चाइना, एंड देन वो आलेख हमारा बढ़ता ही गया। बिजनेस हैज ग्रोन नाउ, लाइक आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इट, व्हाट आई डिड एंड व्हाट रिस्क आई टुक, आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इट। एंड उसके बाद मेरी अभी पूरी फैमिली उसमें डिवोटेड है। एंड जब जिंदगी में अभी पीछे देखता हूँ तो ध्यान में आता है कि मन में जिंदगी के बारे में कुछ लक्ष्य की क्लैरिटी हो तो रास्ता मिल ही जाता है, और उसमें माता पिता के आशीर्वाद और गुरुजनों के मार्गदर्शन और परिवार का साथ रहा तो काम नहीं लगता। आज 40 साल से मैं इस काम को दिल से कर रहा हूँ और बड़ा फुलफिलमेंट का अनुभव करता हूँ। अभी आप यहाँ पे सब बड़े सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बैठे हुए हैं। हर एक एंटरप्रेन्योर आगे बढ़ना चाहता हूँ मैं, और 2 स्टोरी तुमको आपको बताना चाहता हूँ, और मेरा संभाषण बंद करूँगा आपके साथ। पर मैं 2 स्टोरी इसलिए बता रहा हूँ कि हाउ एवरीबडी वांट टू ग्रो इन हिज लाइफ, बट कहीं तो भी जाके उसका बिजनेस रुक जाता है। कभी कभी बिजनेस की वैल्यूटी भी खत्म हो जाती है। तो उस टाइम पे आपको कुछ तो भी अलग से करना पड़ता है। सम इनोवेशन यू हैव टू ब्रिंग इन, बट इवन यू ब्रिंग द सम इनोवेशन, इट विल एड सम वैल्यू। बारीक चेंजेस करके आप आपकी एफिशिएंसी बढ़ा सकते हैं, मार्केट का शेयर बढ़ा सकते हैं।
मगर आपको मार्केट में प्रीडोमिनेंट पोजीशन लेनी पड़ेगी, लेने की इच्छा होगी। जैसे मैं मेरे 2-3 एग्जाम्पल बताऊंगा आपको कि प्रीडोमिनेंट पोजीशन लेने की होगी तो आपको छलांगे लगा के आपका खुद का ऑर्बिट ही चेंज करना पड़ता है। जिस ऑर्बिट में आप रोज घूम रहे हैं उससे छलांग लगा के ही आप ऊपर जा सकते हैं। अगर उतनी हिम्मत करने की तैयारी होगी तो ही आपका बिजनेस आगे बढ़ता है। There are so many examples in our country, the people have done this. जैसे रिलायंस ग्रुप, मुकेश अंबानी मुझे सीनियर थे, उनको काम करते हुए मैंने देखा हूँ मेरे कॉलेज डेज में से, और हमारे दोस्त उनके साथ काम करते थे, जो स्टूडेंट्स हमारे साथ आते थे, द वे विद द स्पीड दे पीपल यूज्ड टू वर्क एंड स्ट्रेटेजी प्लानिंग जो करते थे, उसके कारण केवल 35 साल में वो ग्रुप आज इंडिया का सबसे बड़ा बिजनेस हाउस बन गया। जीरो से बिगेस्ट, शॉर्टेस्ट पीरियड में इतना बड़ा उन्होंने अचीवमेंट किया है। उन्होंने, वो सिर्फ एक टेक्सटाइल इंडस्ट्री में थे, टेक्सटाइल इंडस्ट्री से उन्होंने पॉलिस्टर ग्रैन्यूल में खुद का फैक्ट्री डाला पातालगंगा में, उसके बाद जामनगर में दुनिया की सबसे बड़ी फैक्ट्री 3.5 सालों में उन्होंने डाली। 3.5 सालों में बोले तो इंडिया, वर्ल्ड का स्टैंडर्ड है 6 years, दिस पीपल हैव डन इट इन 3.5 years। एंड इसके आगे तो जियो ने क्या कमाल किया है, सबको इतना डाटा सस्ता करके दिया है, ये पूरे दुनिया में इतना सा डाटा सस्ता नहीं किया किसी ने। तो दिस इज द कमाल ऑफ द Mukesh Ambani, who have taken steps to literally put his group from one orbit to another and another orbit to another. This is a continuous tradition he could maintain. This is a very unique example. Of course, Elon Musk is something different, but Mukesh Ambani has surely done it. और मेरे 2 जनरेशन के 2 मुझे आपको एग्जाम्पल देना चाहता हूँ, मैं आपको बयान करना चाहता हूँ। एक है दैनिक भास्कर का। दैनिक भास्कर एक जो ग्रुप है, आप लोग इसमें देखा कि इन लोगों ने कैसी हिम्मत की है। ये दैनिक भास्कर जो ग्रुप है वो एमपी में 40 साल से सीमित था, मगर उनके जब नेक्स्ट जनरेशन मार्केट में आई, बिजनेस में आई, बच्चे बिजनेस में आए हैं, दोज पीपल से व्हाई रिमेन रिस्ट्रिक्टेड टू एमपी, व्हाई वी कैन नॉट हैव आवर पेपर इन ईच सिटी इन द इंडिया। तो उन्होंने एक लक्ष्य रखा कि मैं जब हमारा पेपर जब जाएगा तो हम फर्स्ट लॉन्च में विल बी द टॉप मोस्ट पेपर इन दैट सिटी। जैसे टाइम्स ऑफ इंडिया है, टाइम्स ऑफ इंडिया से ऊपर और उसके बाजू में जाके पहले लॉन्च में करने का था। तो ये लक्ष्य हासिल कैसे करें? So those people have really put up such a great efforts of serving the all readers, newspaper readers, and they understood what a reader wants. उसको क्या चाहिए? उसके बात करके उन्होंने उनकी मालूमात करा के लिए उनको क्या चाहिए, उनको उनके पेपर के डिज़ाइन का हिस्सा ही बना दिया, और वो पेपर का एक ड्राफ्ट न्यूज़ पेपर बनाया, और हर एक आदमी ने जिनको उनको इनपुट दिया उसको जाके उसने बताया। एंड आफ्टर टेकिंग सो मच एफर्ट, किसी ने ऐसा किया नहीं होगा पहले, तो कॉन्फिडेंस इतना मिल गया उनको रीडर्स का कि पहले ही साल में उनको जो सब्सक्रिप्शन मिली, in addition what they did, they given a 25% discount on the paper value, वो जो कोई सब्सक्रिप्शन देगा, और उस पर बोला कि पेपर पसंद नहीं आया तो आपका पैसा वापस दे देंगे। तो इतना होने के बाद ऐसा इंडिया में तो कभी हुआ नहीं, पीपल हैव गॉट कॉन्फिडेंस एंड दे गॉट लॉट ऑफ सब्सक्रिप्शंस। फर्स्ट लॉन्च में उनका पेपर, उनकी हिस्ट्री आप देखेंगे तो एवरी सिटी दे स्टूड फर्स्ट और सेकंड एट द पहले लॉन्च में उनका पेपर का वॉल्यूम सर्कुलेशन इतना बड़ा हो गया। आज देश में दैनिक भास्कर ये सबसे बड़ा पढ़ा जाने वाला पेपर है। यस सर। ये तो मुझे वो रमेश चंद्र जी अग्रवाल के बेटे होंगे। राइट। सो इन्होंने ये जो स्ट्रेटेजी डेवलप किया उसके कारण उनका सर्कुलेशन आज इंडिया में सबसे ज़्यादा है, टाइम्स ऑफ इंडिया से डबल है। कैन यू इमेजिन दिस? अपन तो टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ने वाले लोग, आपको लगता है टाइम्स ऑफ इंडिया सबसे बड़ा है, पर आज भारत में सबसे बड़ा उनका सर्कुलेशन है, एंड दे आर डूइंग वंडरफुल। उन्होंने ये न्यूज़ इंडस्ट्रीज का डायनामिक से चेंज कर दिया जस्ट बाय एन एफर्ट, अ सिंपल आइडिया कि भाई कस्टमर को विश्वास में लो, और ये विश्वास में लेके I'm sorry to intrude, but you would like... I'll just get to it. I'm so sorry, but थोड़ा इंटरेस्टिंग थे कि ये ऑर्बिट शिफ्टिंग के जो एग्जांपल्स रहते हैं, वो ऑर्बिट शिफ्टिंग के एग्जांपल्स
जब तक आपको मालूम नहीं पड़ेंगे और आप पढ़ेंगे, ऐसे तो दुनिया में बहुत होंगे ऑर्बिट शिफ्टिंग के एग्जाम्पल, पर ऑर्बिट शिफ्टिंग के लिए जो एनर्जी लगता है, जो एफर्ट्स लगता है, जो कोई भी लेता है, he just shifts himself to another orbit. ऐसे 2-3 एग्जाम्पल है, अभी टाइम तो नहीं है, मैं इतना ज़्यादा अच्छा वक्ता नहीं जो फ्लो में आपको इस टाइम में बता सकता था ये सब, मगर anyway there are many good orbit shifting examples you should seek for, look for, and उसमें आपने इंस्पायरेशन लेना चाहिए और आगे मूव करने की हिम्मत करनी चाहिए. And everything is possible in the life if you decide. आखिर में इतना ही कहना चाहूँगा कि पुरुषार्थ करना हर व्यक्ति का धर्म है. उसके लिए पहले तो अपने जिंदगी का लक्ष्य चुनना चाहिए, उस लक्ष्य में उसकी श्रद्धा होनी चाहिए, उसे मिलाने के लिए अपनी जिंदगी खपाने की मन की तैयारी होनी चाहिए. आप मन में धार ले तो भगवान भी आपका साथ देता है. आज इतने एंटरप्रेन्योर जो आप देखे, हर एक का कहना वही है कि आप यू जस्ट डिसाइड एंड एवरीथिंग फॉल इन योर लाइन. So it is said that boldness has genius power and magic in it. आप शुरुआत तो कीजिए, हो सकता है आप में से ही किसी की ऑर्बिट शिफ्टिंग की कहानी आते 25 साल में दुनिया सुनेंगी. और मेरी आप सभी को शुभकामनाएं. बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू. Thank you, sir. You have enlightened about learning beyond your domain is important for business, about all the importance of finance. As our program draws to a close, I hereby call upon our newly appointed secretary couple, Mr. Sagar Ji and Poonam Ji Rathi, to offer the vote of thanks. Thank you, Maithili. Jai Mahesh. Jai Sri Krishna. Respected Chief Guest, Guest of Honor, awardees and honorable invitees and our beloved MIG परिवार. हम MIG बोर्ड की तरफ से आप सभी का हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं. विशेष धन्यवाद हमारे चीफ गेस्ट डॉक्टर श्रीकांत जी करवा और गेस्ट ऑफ ऑनर श्री सुरेश जी सोदानी का. आपकी उपस्थिति ने इस समारोह को गौरवमय बनाया है. आपका मार्गदर्शन हम सबके लिए एक अमूल्य रहेगा. आज के सभी MIG अवार्डीज को बधाई. आपकी मेहनत और योगदान समाज और उद्योग जगत के लिए गर्व का विषय है. आउटगोइंग MIG बोर्ड विशेष रूप से पास्ट प्रेसिडेंट श्री जितेंद्र जी और कीर्ति जी लखोटिया का दिल से आभार व्यक्त करता हूँ. और हमारे सेक्रेटरी कोहिनूर जी इंदानी और अनु इंदानी का जो कि वन मैन आर्मी थी, उनका भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ. उनका योगदान हमेशा याद रहेगा. ऑर्गेनाइजिंग कमेटी का भी धन्यवाद जिन्होंने इस इवेंट के हर पहलू को सफल किया है. MOC टीम कायरा इंदानी, प्रांशी मंत्री यशिका एंड मैथिली राठी, दिव्यांका सारडा, केया मुंदड़ा, दिया एंड मधुर पुतड़ा, भाग्येश एंड अपूर्वा लकोटिया और उनके मेंटोर वन एंड ओनली आनंद जी करवा. मैं सभी को फेलिसिटेशन के लिए स्टेज पे आमंत्रित करती हूँ. सब जन आ जाइए MOC टीम. अब सभी से निवेदन है, कृपया राष्ट्रगान के लिए खड़े हो जाइए. जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता.
पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे थैंक यू वंस अगेन, सभी का दिल से धन्यवाद। मैं सभी को विनम्र अनुरोध करती हूँ कि भोजन की व्यवस्था ग्राउंड फ्लोर पे की गई है, कृपया सभी लोग भोजन का लाभ अवश्य लें। आपकी उपस्थिति ने इस समारोह को और भी यादगार बना दिया। हम सब आभारी हैं। बरोबर. तुम्ही कुठं ममता आम्ही शक्यतो येतो करूनच बघू इथं काय आहे ते. पुढे